He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. Asato ma sadgamaya tamasho ma jyotirgamaya mrityorma mritam gamaya sarve santu niramaya sarve bhadrani pashyantu ma kaschid dukha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Aham Brahmasmi. Good evening, everyone, and welcome to your day of Q&A. So 142nd. So by this time, everybody is enlightened. So there is no question, no hands raised. So good to see that. 1, 2, 4. Very good. So as we are reaching, like the number of days are growing more. So I believe like people are also getting to know themselves. So questions are vanishing. That's a very good sign. You're actually helping me to close down the session so that I can also take care of some other things. Person has raised hand, like never raises hand, right? Can we go for meditation? Why not? वो बेस्ट है ना विजय जी, जिस दिन सारे सवाल खत्म हो जाएंगे उस दिन मेडिटेशन ही करेंगे. चलो ठीक है. So Suma ji. Yes, Suma ji, please unmute yourself. Go ahead. Pranam Deva. Am I audible? Yes. Okay. I have a couple of questions. I don't know, Miss, these are not like burning questions or anything, but as these popped up, so I just wanted to get a clarification. Yes, go ahead. Okay, actually, so like in 2, 3, so like maybe a week, 1 month back in one of the QA session,
you have said like we have different gurus and people go to different gurus because whatever they want, like based on their requirement, they go to different gurus, right? Mhm. So if you are giving everything to us spiritually or like holy and everything, and then some people moved or like some people stopped, or not only to you, like I'm talking about generally, like people go to some gurus for some time and then again they stop. So is it because of the Runar Bandhan that they have got only that much from that guru and then they stopped, or like, so what, like everyone cannot be a student of a guru? Is it the choosing of the guru or is it the choosing of the student? Like I want to be with, he is my guru and I want to stick with him, or is it the guru's choice that these people should be my students, or like how it is, like this relation? How this Okay. is? Okay, good. And, Again, and is it better to be a student or is to be a devotee? Because there is a difference between these two, right? Because guru और शिष्य का तो relation is अलग है, and भगवान और भक्त का तो अलग है. So which one is better? Like more. okay. This is first question. Oh, so the first question has two types in it. Okay. Yeah. Okay. So shall I start with that, or you will No, no, put no. the questions? Yeah, Okay. yeah. Continue. Okay. So the question is, why people come, why people leave? Is it Runanubandhan? And if we are giving everything, then why people are still moving out? Or see, people will come, people will go. The only thing that I have said and I have been continuing is we are not going anywhere. Now, the first answer that I have already given you years ago. अगर गुरु सही है और शिष्य गलत है तो शिष्य भाग जाएगा. अगर शिष्य सही है, गुरु गलत है, तो गुरु भाग जाएगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? People are moving. You see, the majority of the time we speak about Shiva. Nothing wrong. We talk about all the gods. But the thing is, the priority that we speak of is Shiva. शिव का क्वालिटी क्या है? उसके सामने झूठ टिक नहीं पाएगा. It will not last. How many masks you put on your face? It will fall off and you will run away. क्योंकि एक परिस्थिति में आके आपको समझ में आ जाएगा कि I cannot actually put more makeup in front of him and I have to go away. हम तो जैसे के वैसे ही बैठे हुए. How I run away? See, I smile before you, I dance before you people, I sing before you people. Whatever I have to do, I do in front of you only. But can everybody do that? They cannot. The second thing that comes is Runanubandhan. Yes, your karmas will put you to a place. That's a past karma, right? But what is your Purushatva? Means what is your doing now? आपको एक जगह पे बिठा दिया गया. See, just like this, like people win lottery tickets, right? So lottery ticket came. क्यों आया? प्रारब्ध था. कुछ अच्छे कर्म थे, प्रारब्ध था, पैसा आया. But what he wants to do with that money now is the doing of now. So is it not written before, like if he gets the lottery, then he will be doing such things like that? So it's not predefined? Is it his free will? Now just think of that kind of God, what it would have been to you. He defines everything. You don't have a free will. If you don't have a free will, how can even you think of freedom? So that is where the benevolence of the Creator comes into play. He said, I have created certain things, but now it is your decision how you want to do, how you want to live, how you want to take this life to the next level. मैंने आपको बुद्धि दिया है, सामर्थ्य दिया है, रास्ता दिया है. Now whether you walk it on it or you just sleep in your bed, how does it matter? It's your choice. देखो, भगवान चावल बनाते, like it grows on a plant, it comes to your home, but what you make out of it is up to you.
So similarly, when a thing is given into your hands, Mhm. now what are you doing with it? यहाँ पे आपका स्वयं का जो धर्म है यहाँ पे आता है. What is your dharma? Because all that you are doing is your karma. Again, remember the same story of Dharma Vyad, right? Hmm. So whatever you have to do because that's your prarabdha, and you have to do whatever you are doing right now. But how well you are doing, that's in your hands. वो आपके हाथों में है. So similarly, प्रारब्ध से आप एक जगह तो पहुंच गए. फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम कहते हैं ना कि ये जन्म का योगी, अगले जन्म का राजा, अगले जन्म का राजा, उसके बाद के जन्म का भिखारी. Why? प्रारब्ध के हिसाब से उसको मिल गया. He became a king. He came to this place. But after that, what did he do? He did not realize it. Hmm. What is the entire game all about? It's not about the gaining just worldly things or just listening to some good words or having a good time here. No. The truth behind everything that we are doing is ultimately killing you. What is killing you? Killing you means absolutely you becoming free of all your desires. जब आपके कोई इच्छा ही नहीं रहे, आपकी मृत्यु हो गई. क्योंकि आपको जीवित आपके इच्छाएं रखती है. Hmm. So here, when you came to this place, let's say you went to a temple. कभी वो भगवान ये कहता कि झुक जा मेरे सामने. You bow down before me. You put a like you put a cloth on me, or you प्रसाद लेके आया नहीं आया, दक्षिणा चढ़ाया नहीं चढ़ाया, ये सब पूछता है क्या वो भगवान? No. So the person who goes till that place, then वहां तक पहुंचाना उसका काम था. उसके बाद it is up to you. It has given you the hand. देखो फिर वही होता है. आपने फिर वो सवाल पूछा, the question that you asked, कि भक्त होना बेटर है या शिष्य? Hmm. Everybody starts as a student only. It ultimately, when that faith and belief comes into play, Hmm. then it converts itself into the other part. आप अपने आप ही शिष्य से कब आप भक्त बन जाते हो आपको पता भी नहीं चलता है. You will never know that. See, just remember your childhood days. Which temple you used to visit? Obviously Narayan. Why you used to go there? First instant. Not when you started understanding or you liked him or the way he is. No. First and foremost thing, why you went there? देखो, बता देता हूं. एग्जाम के रिजल्ट निकलने वाले हैं. The time when the exam result is coming, भगवान 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 भगवान, पास करा दे, दिया जला दूंगा. So how it had all started? It all started with a need. ये जो मुझे जो चाहती, मुझे जो जरूरत थी, वो जो मुझे देता है, मैं उसके पास भाग के जाता हूं. Just go back to a child. बच्चा जब पैदा होता है, the first time the infant is born, the first priority for that kid is the mother. Hmm. That's why it is very close to the mother. Next, जैसे थोड़ा बड़ा होने लगता है, you all might have seen that. Then he needs clothes, cycle, watch, phone. Then where does he go? He might ask you, but ultimately from where he is getting it? From his father. He runs towards his father. But when he is capable enough, what does he do? He run away from them. Yes. Yes or no? मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको छोड़ के भाग गया, but I'm just saying that is how it happens. True. मतलब we are need-based people. But in that also there are people, ऐसे लोग हैं जो अभी तक अपने माँ के चरण छूते हैं. They still touch the feet of the mother. Why? Because for them, the mother is not just a need of the infancy. The mother is a life giver for the entire life. और उसके सामने वो झुक जाते हैं. They still take care of her. ये नहीं कि मैं बड़ा हो गया हूं तो बस. No. So what does that mean? That means it started with a need, but later on it converted itself into love. It converted into a भक्ति. मैंने तो ऐसे बच्चों को भी देखा, like some kids are still there.
For them, if you ask them, they will tell that their father and their mother is their hero, or their father and their mother is their God. ये सब नहीं बोल पाते because that conversion has not happened. वो नीड बेस्ड था, नीड पूरा हो गया, वो चले गए. But that they could never see the things beyond that. राजा के पर्दे से काम हो गया. घर में मेरे पर्दा नहीं था, इसीलिए मैं पर्दा लेके आ गया. I didn't had a curtain. I took it from the king. The curtain is well fit to my home. I will put my home and I'm happy. Why should I go back? अब आता है, again go back to the story of Krishna and Arjuna. He was a friend. Then he saw him as he wanted to learn something from him, right? So he started questioning. And Krishna answered. And after that, what happened? He showed his true self. Then what happened to him? वो दोस्त से, एक मित्र से भगवान बन गया. स्टूडेंट बन गया, स्टूडेंट से उसका भक्त बन गया. But So it takes the same thing with all of us. The first thing that you saw is just a friend of yours. हरि भाई को देखो, हरि भाई बोले same story. So you started as a friend, but then later you saw something that this person knows something. So let me question it. When the question's answers were hitting them right at the right place, then he said, no, this is not just the questions. There is something else that is hitting me. Then he started experiencing it. Means it is not just a mental game anymore. It's a game of an experience now. When it became an experience and that experience converted itself into life, then that friend of yours becomes your God. That father of yours becomes your God. That mother of yours becomes your God. So that kind of understanding, उस तरीके का जिस दिन समझ में आ गया. So the day you people realize that, you will be sitting here, you just, and what are we doing? शायद उनको मुक्ति मिल गई. Why should we be worried? शायद वो मुक्त हो गए. और सबसे अच्छी बात सुमा जी, उनसे मैं मुक्त हो गया. no, actually here मेरा एक doubt था. Usually they say once you go touch the feet of a guru, it is like you are entering into the lion's bone or something like that. Like it is like one way. So even though you come out, he will never leave you. Okay. And then it is the, and we say like we come to guru and then we say like everything is your sankalp, without your sankalp nothing will happen karke. So if we are leaving, then will it come as that? Beautiful. Again a beautiful question. देखो, एक चीज है कि मैं अपने बुद्धि से जीता हूं. I live with my own knowledge, with my own wisdom. I go to the temple, I pray to the God, but I say ये ठीक है, लेकिन मेरे हाथ में जो शक्ति है मैं उसके हिसाब से करूंगा. ये कर्म करने वाला इंसान है. राइट? ये कर्म पुरुष है. But there are certain people जिनको समझ में आ जाता है. See, the reality they come to know is actually क्या कर रहा हूं मैं? What am I exactly doing? There is nothing that I can do. Then what does he do? Raise your hand. That day the divine takes over. तुम हाथ तो उठा के देखो. और दूसरी बात, आपने एक सवाल पूछा कि ये कहते हैं कि the one who goes to the guru never leaves the student again. I have never left anyone. And more than that, wherever they go, still my words will ring in their ears. Someday or other, it will work for them and they will come to know that he is still walking with us. तो हमारे साथ अभी भी चल रहा है. I just walk with you as you. So is it true like once if anybody comes and touches the feet of the guru, then even though they don't visit him again or something like that, guru will always be there for them? Is it? That again depends. That again depends. How are you touching the feet of the guru? It is just because everybody is in the line you are doing that? Okay, so भाव से करते हो, then you have to. No, it is not just a भाव. यही तो है ना कि अगर भाव नहीं तो अभाव तो रह ही जाएगा. मैं क्योंकि सारे लोग पैर पड़ रहे तो मैं भी पैर पड़ लूं, क्योंकि मुझसे कुछ छूट ना जाए.
और ऐसे तो कई लोग पैर पड़ते हैं। तो राम ने क्या कहा कि जरूरत पड़े तो गधे के पैर छू लो, तो अभी जरूरत है तो हमारे भी छू लो, सोच के ये कि हम गधे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें, काम हो रहा है ना, दैट्स ओके। और हमें भी क्या फर्क पड़ता है। सो इट इज ऑल अबाउट द कनेक्टिविटी। इट जस्ट लाइक दिस, आपके घर में इलेक्ट्रिक सॉकेट है ना, you are putting a charger into that and charging your phone. Okay, I just leave that and put my phone below that. I will not connect it. Will it get charged? No, No. Why? connection is not there. So who should connect? Okay, so Because the one who is draining out, he should connect, or the electric socket who is always filled with current should connect. So किसको कार्य करना है? okay, Now you think like I should tie you around and then I will teach you. No, वो हम नहीं है. Because if I tie you down, then how can I talk about your freedom? अगर मैं आपको बांधता हूं तो मैं खुद बंध जाता हूं। आपने देखा है, like you might have seen in your villages, some cows are tied to that bamboo sticks, small bamboo sticks, na? At times you see they pull that out, and when they are roaming, the bamboo stick is also going along with them. हम वैसे नहीं है. See, in order to tie that cow, the bamboo should be grounded first, or else the cow will. So similarly, we are just sitting here. Why should we tie you out? जब उसने नहीं बांधा तो हम क्यों बांधे? But आपकी बुद्धि तो है ना? You have a wisdom, you have a knowledge, right? What is working, what is not working? It should be not just spoken based on others' experience. It should be spoken based on your own experience. And if your experience is speaking, I believe that is more than enough. What more proof does it requires to you instead of your own experience? Because all other things are stories. सच में राजेश जी को हुआ, अश्विन जी को हुआ, नहीं हुआ, ये क्या पता? I don't know. But has it happened to you? So you become your own testament. You become that, what do you call like that, litmus test for your own self. Don't just believe on others. But You test it for yourself. if people have experiences, still if they go away and like, I don't know, like, should we, like, if we are meeting such people, then what should we do? What should you do? Because they're losing them. They are losing. Should we tell So them? you are or- worried for them. No, it's just like because like if somebody asks me the same thing, so what should I reply to them? So that is my, If somebody asks you what, like, see, if they see someone who has so many experience with a guru and still if they leave the guru, and if you come across such people in the life, okay, and because usually we start saying like you, based on your experience, you know what is what, so why did you leave, karke, that people will start conversating and all, right? So what should we do in those situations? Should we participate in that, or should we just keep quiet, or like what should we do? Versus, क्या देवा? कौन बैठ के ये सब बातें करते जानते हैं जिनको कोई काम नहीं होता है? मैं तो कहता हूँ जो सच में ये रास्ते में चले ना, the ones those who have really moved in this path, when they meet, they will sing songs about God. They will not talk, why did you left? Is he not good? That means you are still struggling in that worldly things. आप कोई सत्संग नहीं कर रहे हो. No, I am not saying he is not good. No. See, people sometimes they advise others, no, like you, you said like this to me, and then now you, because I have heard from someone saying the same thing, like, I did not say anything, I just kept quiet. They were saying like, he advised me how good the guru is, and then he left, what is this, karke? I said like, I don't know. I cannot comment in this situation. No, not only that, Sumaji, you should not comment, you should not feel bad as well. आपका चेहरा देखो एक बार. No, bad वो तो कुछ नहीं, what to say? You say,
whatever he had the experience, because of that he sent you here. Now it is your turn to experience. उसको जो मिलना था उसे मिल लिया. He has left now. What about you? Now tell me about you, not about who has gone. भूत के बारे में कौन बात करता है? So you should be, that's the first and foremost learning, Sumaji. Everywhere, wherever you go, the first and foremost learning should be living in the present, in this moment now. And while I'm just talking all these things, am I really creating something, or I'm just wasting my time here? That should be, you should be very, very careful, because आप जब साधना के मार्ग में चलते हो ना, you have started walking on this path. Have you heard of all the rishis and munis and all those people? How many years did they do tapasya? Just to get one mantra? Yeah. Just to get one experience? Just to feel the experience of the divine within themselves, or the presence of the divine? In order to get that, how long did they do the tapasya and the jap? How many years? Yeah, some did hundreds of years, thousands of years also. Thousands of years. Yeah. So when those people took thousands of years and you people are getting it so easily, then you should think, what am I losing if I am even spending one time talking something else? Right. So it's not anymore about anyone. It's all about me and he, or the God. Whatever you call it, the name that you call it. See, as I said, the mind will do its work. भगवान ने बुद्धि बनाया है, वो अपना कार्य करेगा. उसने शरीर बनाया है, उस अपना काम करेगा. It will do its work. But what am I doing? Because you are not that body, not the mind, right? So if you are not that body and mind, then what are you doing is my question. Am I getting involved with my body and mind and again getting involved into that questions and answers? No. No. That is what I said. You should be still first. Okay. So, सबको मौका मिलता है. And what you do is, whether you utilize it or misuse it or you lose it, it's up to you. So But it's yes, purely in our hands. So it's like purely in our hands. it is not just purely in your hands until you raise your hands. Okay. The day you raise your hand, it's done. Everything is in his hands now. Got it? So यही होता है. ये होता है एक सवाल पूछने वाले में और एक भक्त में डिफरेंस होता है. भक्त कहता है भाई अब तू मार दे, फेंक दे, गिरा दे, जो भी कर दे, तेरे हाथ में. क्या कहता है? तेरे हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है, कहता है. So this is where it will come. The day you bow down, do you think the person who has really bowed down will ever go? No. That itself is the answer. The one who has bowed down before you in true self. Why did he bow before you first? Because he understood something in you. उसको सच्चाई दिखी उसमें. It just did not just reflected the truth, it reflected his or her own truth in front of her. गुरु होता क्या है एक्चुअली? आप ही की सच्चाई आपके सामने आता है. गुरु और कोई नहीं होता है. और किसके सामने आप झुक जाते हो? If you really bow down means your ego has been surrendered. क्या लेके जाता है आपको दूर? It is again your ego that will take you away. ये क्या बोलते हैं? इससे अच्छा मैं बोल सकता हूँ. What is that? That is the ego. ये क्या सिखा रहे हैं? इससे तो बहुत अच्छे अच्छे सिखाने वाले हैं. What is that? अभी बहुत समय है, बाद में सीख सकते हैं. What is that? अभी थोड़े ना उम्र हुआ है. What is that? ये सब इंटरनेट में भी मिल जाता है. What is that? Can you see? It is your own ego that actually takes you away. And the one who has truly bowed down, that means they have surrendered not just themselves, but their ego along with it. और जिस दिन आप झुक गए और कभी उठना नहीं पड़ेगा, वो उठा लेगा आपको. It will take you up. Because bowing down
is rising up. So this came in. So the next question is related to this only, Deva. Is Go ahead. if I'm saying like we all say like सब आपको ही समर्पण किया, we surrendered completely to you. So now everything आपका है, and like that we say. So And you are then just saying, or it is No. in truth? it is true. No, what is my question is like I am completely surrendered. सब कुछ आपको समर्पण किया है. So सब कुछ Okay. समर्पण करने के बाद I am saying come to my home or me करके. So again if सब कुछ समर्पण किया तो me और my कहाँ से आया? So That's what. how to address that one? How to address that one? The Ah. same thing. You only said no. The question itself is good enough. जब सब कुछ समर्पित है, फिर मेरा घर क्या, उसका घर क्या? But still we ask you like you come to our home, you visit our home करके भी हम पूछते हैं ना. उसके लिए भगवान ने एक शब्द बनाया है जिसे कहते हैं श्रद्धा. श्रद्धा क्या है? मेरे राम आज लड्डू खाएंगे. अरे राम लड्डू नहीं खाएंगे, लेकिन मैं लेके जाऊंगा. का मतलब क्या है? ये श्रद्धा है, ये आपका भाव है. वही है कि see you have to do one thing. Even this home that is, it's yours, right? And I welcome you to your own home. Then who am I to welcome you? No, आपने मुझे यहाँ संतरी बना के बैठा है ना. संतरी में समझते हो ना, गेट कीपर. तो आपने मुझे यहाँ गेट कीपर बना के रखा है. सो ये जो 4 दीवारी है, इसका जो गेट कीपर हूं मैं, तेरा ही है. But I just welcome you because you have allowed me to sit here. So this has become a possession to me given by you. So भाव तो वैसा ही होता है, but when we ask you, we say we don't say like that is also your home. You just come. think of We this, just say Sumaji, like that you day, come to my home. just understand this. अगर आपने मुझे कहा और मैं आपके घर आ गया होता, ये सवाल ही नहीं आता था आपको. What kind of question? The question of realization. That जब सब कुछ उसका है तो मैं किसको बुलाने के लिए सोच रही हूँ? कहाँ बुलाने के लिए सोच रही हूँ? Can you see that delay is creating an experience within you that is actually elevating you, not degrading you? Delays are not denials. ये हमेशा याद रखना. Delays are never denials. वो आपको किस तरीके से सिखा सकता है वो उसे पता है. So still we can say that we can invite you like that. Come to our home. वही मैं कहता हूं ना, वो श्रद्धा है. देखो श्रद्धा से तो उसके ऊपर आप राख भी चढ़ा दो, वो उसको ग्रहण कर लेता है. He accepts it. Whatever you put, it accepts it. क्योंकि वो आपकी श्रद्धा है. और देखो क्या हाल बना के रखा है हमको. अच्छा जीन्स टी शर्ट पहन के भी मैं बैठ के यही बात कर सकता हूँ. नहीं नहीं नहीं, ये अच्छा लग रहा है आपको. हाँ ठीक, अच्छा लग रहा है, पहना दो. तो हम भी पहन लेते हैं. क्यों? See, that is what shows your devotion, love. That's what I see. That's it. और कई बार सुमा जी और भी कुछ एक सवाल का उत्तर देना चाहूंगा. कुछ लोग पूछते हैं मुझे कि मैं इतना गलतियां करता हूं फिर भी आप मुझे कैसे अभी भी संभाल के रखे हो, या तो उसने इतनी गलतियां की आप फिर भी गुस्सा क्यों नहीं करे. Why don't you get angry? See, गुरु का एक क्वालिटी होना चाहिए. It can be a school teacher also, it can be a teacher, it can be a guru. The simple thing is, let me answer that because somebody asked me, so I said I will be answering in the Q&A. मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूं. मैं कहता हूं मैं तुझे नहीं देखता हूं, मैं तेरी साधना को देखता हूं. I don't see what you are doing, I'm only seeing तेरी साधना क्या कर रही है. I'm not seeing what errors you are doing, what falters you are doing. मैं तेरी साधना देख रहा हूं. क्योंकि गुरु का काम सिर्फ तुम्हें हर जगह से ठीक करने का काम नहीं होता है. उसका काम होता है तू अपना साधना सही तरीके से कर रहा है कि नहीं. क्योंकि अगर साधना सही हो गई तो सारे काम अपने आप सीधे हो जाएंगे. और अगर मैं ये देख के आपसे बात करूं कि आप कितने अच्छे दिखते हो या नहीं दिखते, फिर तो हो गया था खेल.
आप कितने बड़े हो या कितने छोटे पोस्ट पे हो, ये सब देखता तो ये खेल ही खत्म हो जाता था. आई डोंट सी यू, आई जस्ट सी अ पर्सन हु इज रेडी टू वॉक ऑन दिस पाथ, और वो साधना कैसे कर रहा है. ऑल द अदर थिंग्स यू आस्क फॉर, दैट इज लाइक, सी इट्स अ हेलो. एक भगवान होता है और एक हेलो होता है. सो दीज आर ऑल द हेलोज ऑफ दैट, कि ये भी हो जाए वो भी हो जाए, दैट्स फाइन, है ना. जो सामर्थ्य है हम में उसमें कर देंगे. बट व्हाट इज द ट्रुथ? मैं आपको वो देता हूं जो आप चाहते हो, ताकि आप वो चाहो जो मैं देना चाहता हूं. दैट्स इट. We give you all that you need, so that you start needing what I want to give. किसी ना किसी दिन समझ में तो आएगा, किसी ना किसी दिन बच्चा बड़ा तो होगा, किसी ना किसी दिन वो ये जान पाएगा कि अरे ये पर्दे से काम नहीं चलेगा, राजा को ही उठा लेते हैं. That's my job. और वही प्रारब्ध समाधि. कुछ लोगों को मुक्त होने का समय नहीं आया है, तो क्या करेगी माया? बुलाएगी और वो चले जाएंगे. लेकिन आप क्या कहते हो? माया बुलाती है, नहीं जाने का नहीं. जाने का नहीं. You see, these are all the Anyhow, हम तो beautiful already ways raised of hands, doing sir, so no issue. You will take care. So for us तो कोई problem नहीं. मतलब अस मतलब जितने लोग आज रूम में हैं उन सब के बदले में आप अस बोल रहे हो, Yes, या there. अपने आप को आप विराट नहीं स्वरूप नहीं, में देख के अस हम बोल रहे हो? सबके लिए बोल रहे हो. हम whoever is sitting, everybody is like that only. Everybody raise their hands, both of their hands high up in the air. So everybody is surrendered. So it's up, आपका काम है, हमारा तो कोई नहीं. We'll just sit and enjoy. That's what I thought. That's why I started going to gym. I said weight बढ़ जा रहा है. Okay. So what's the next question? और मतलब मुझे लगता है कि हाथों के पूरा बारिश हो जा रहे हैं. So I will stop. I will ask again in next session में, because still so many. Very good. So Very good. let others Thank you have so the. much. So Thank you, this Suma. one, just one thing. So even though we completely surrender, still we can say me or I. So there is nothing wrong in that, because No, nothing wrong. because देखो, वो रमन महर्षि का तो books में हम पढ़ते हैं, तो he used to say even his body also he never addressed as me or I, right? So absolutely. You see, first and foremost, you reach to his level, and then we will speak. no, क्योंकि इसलिए doubt आ गया. So हम वैसा कर रहे हैं तो. You understand this? Why was he saying all that? He was saying this is a level of perfection. This is where you should reach. He was creating an example out there. So जो example बनाता है, वो कहते हैं ना, ऑडियो वीडियो मैच होना चाहिए ना. Yeah. If the audio is going somewhere, the video is doing something else, would you like to watch that kind of movie? No, na? So whatever he is speaking, he is living that, he is walking his truth. That is my question. So if we are saying we are completely surrendered, and then we are saying me and I, did we completely surrender or not? Surrender does not happen at a physical level. Surrenderness comes at the union of the soul with the soul. Have you surrendered? That's your answer. Because that instantly, इसीलिए कहते हैं ना, जो ईश्वर है वो सबसे दूर है और सबसे करीब है. It's the farthest and the closest. Farthest किसके लिए? जो अज्ञान है, वो कहता है कि वो वहां है, मैं यहां हूं. It is far. और जो कहता है वो ही है, nearest. So, thank you. Good question. Thank you. Thank you, Suma. Thank you, Anna. Abaji, please unmute yourself. प्रणाम गुरु जी. प्रणाम आभा जी. गुरु जी, एक रामचरितमानस में चौपाई है कि अच्छा. गुरु बिन भवनिध तरह न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई.
तो गुरुजी मुझे तो सिर्फ इतना पता करना है कि गुरु तो ये तो पता है कि यहाँ से उद्धार नहीं हो सकता, भव सागर से पार नहीं हो सकते जब तक कि गुरु नहीं लिया है, गुरु नहीं मिला है, ओके क्योंकि उसी के बिना हम एक स्टेप भी नहीं आगे बढ़ सकते, ओके पार तो नहीं हो सकते, इतना पता है। हम्म। तो गुरुजी क्या गुरु तत्व को मान लेना या दीक्षित होना, पूरी तरह से मतलब कर्मकांड से पूरी दीक्षा ले लेना, या फिर गुरु तत्व को मान लेना, स्वीकार कर लेना? ओके जस्ट लाइक मैंने जिसको मैंने कभी देखा नहीं है ना, जिसकी सिर्फ वीडियोस देखी है, जिससे सिर्फ बात भी नहीं करी, इवन हाँ जी शकल देखी है, तो कभी कभी उसके लिए एक अलग सा इंट्यूशन होता है अंदर से कि गुरु है तो यही है, गुरु है तो यही है, मतलब इस तरीके से जैसे होता है। तो क्या उस बिल्कुल भाव में आकर उसको भी हम मानेंगे कि हमने ओके गुरु की प्राप्ति हो गई हमको, या दीक्षा लेंगे तभी उसको पूरा पूर्ण माना जाएगा, या ओके केवल हमने सुने हुए उनके शब्दों से हमारा पार हो जाएगा? ओके चलिए, बहुत सुंदर सवाल आभा जी। इसका उत्तर हम लेते हैं अष्टावक्र गीता से। अष्टावक्र गीता में यही सवाल पूछा गया है कि पूजा पाठ कर्म कांड ये सब करना जरूरी है, दीक्षित होना जरूरी है, क्या किसी के शरणागति होना जरूरी है, क्या उसी से ईश्वर की प्राप्त होती है? और अष्टावक्र जो हैं, ही कॉल्स स्पेड अ स्पेड, वो कोई क्रीम बटर लगा के बात ही नहीं करता है। अगर आप अष्टावक्र गीता पढ़ोगे, फर्स्ट लाइन विल किल यू, वो ऐसा लिखा हुआ है। उसने सिर्फ एक ही और एक ही चीज कहा कि जिसकी शरणागति गए हो, जिसे गुरु माना है, जिसके साथ तुम चलते हो, जो कर्म कांड तुम करते हो, ये सब किस लिए है? फॉर व्हाट रीजन? टू नो द अल्टीमेट, टू एक्सपीरियंस द अल्टीमेट। And the day you experience the ultimate, neither the guru lives anymore, neither the karma कांड। ना आपका कोई कर्म कांड बचता है, ना आपका पूजा साधना बचता है, ना ही आपका गुरु बचता है, ना ही आप बचते हो। इसीलिए कहते हैं कि महा प्रलय जो होता है वो होता है स्वयं का साक्षात्कार होना, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाना। इसे सबसे बड़ी मृत्यु कहा गया है, बिकॉज उसके बाद कोई मृत्यु है ही नहीं। तो ये कहते हैं अष्टावक्र कि अगर आप किसी को देखें, फॉर एग्जाम्पल आप जैसे कहे कि किसी को देखते हो और आपको लगता है नहीं गुरु हो तो यही होना चाहिए, ये तत्व इसमें दिखता है, क्या दिखा आपको उसमें? हिज ट्रुथ, हिज नॉलेज, हिज वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ही लुक्स। देखो कई तरीके से चीजें हो सकती है। और ये आपको क्यों अच्छा लगा? क्योंकि आप वही सारे उत्तर वो देने लगा है जिसको आप शायद ढूंढ रहे थे। सो व्हाट डज दैट मीन्स? इट क्रिएट्स अ ब्रिज। ये फर्स्ट ब्रिज है। दूसरा, दीक्षित होके आगे बढ़ना, बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन अगर वो आपको अपने पास बांध के रख लेता है कि मैं हूं और कोई नहीं है, और भगवान मैं ही हूं, मेरी आरती करो, समझ जाना चाहिए कुछ तो गड़बड़ है यहां पे। देयर इज समथिंग रॉन्ग हियर, बिकॉज गुरु का काम आपको दबा के उसके ऊपर गद्दी बना के बैठना नहीं होता है। लेट मी बी वेरी रॉ इन दिस एंड बी वेरी क्लियर इन दिस। और मैं ये बोलना चाहता हूं बिकॉज ये हो रहा है। मैं अगर आपको नीचा रखना चाहता हूं, मैं किस काम का गुरु? ऐसा कोई टीचर हो सकता है जो चाहे कि मेरा स्टूडेंट मेरे से बेटर ना हो? वो टीचर कैसा? सो व्हाट आभा जी, एक ही चीज आपको याद रखना है कि वो जिस चीजों को बताते हैं, क्या वो मुझे अल्टीमेट तक रीच कराती है? अगर ऐसा है, क्योंकि ये सारे सीढ़ियां हो सकते हैं, दीज माइट बी द स्टेप्स दैट टेक यू टू दैट प्लेस। सो शुरुआत वैसे ही होगी, लेकिन हमेशा एक ही चीज आप याद रखिए कभी भी, व्हाट इज दिस पर्सन डूइंग? फॉर एग्जाम्पल आप सब देखे होंगे प्रेमानंद जी, राइट? उनको देखो, यही है ना, वही नाम ना?
मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। हाँ, मैं भी उन्हीं के नाम ही ले रहा हूँ, आपका चेहरे पे लिखा हुआ है एक्चुअली। जी जी मैं उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। सो गुरुजी उन यू सी, ऐसा क्यों लगता है उनको देख के? कुछ क्योंकि वो झंझट होता है निष्काम है, अंदर। वो व्यक्ति बिल्कुल निष्काम है, उसे कोई मतलब ही नहीं है किस चीजों से। और ये कहते हैं ना कि उनके दोनों किडनीज खराब है ना। यस 17 साल पहले उनको डॉक्टर ने कहा था कि हार्डली तू 2-3 साल जिएगा, लाइक ओनली 2-3 years। जी जी और जी मुझे सच में लगता है वो 2-3 साल ही जिए। अगर आप उनके पुराने वीडियोस कभी सुनो तो आपको समझ में आ जाएगा, वो 2-3 साल ही जिए, उसके बाद उनकी तो मृत्यु हुई। लेकिन अब जो बात कर रहा है, या तो राधा बात कर रही है या तो कृष्ण बात कर रहा है। कृष्ण, हाँ या तो कृष्ण। बिकॉज द वे ही स्पीक्स नाउ इज नॉट, उसका हम्बलनेस देखा है आपने उस इंसान का? हाँ। कहां से आता है ये? क्योंकि अकड़ नहीं रही, और वो पकड़ छूट जाती है ना तो अकड़ भी छूट जाती है। आप जब तक पकड़ के रखोगे तब तक अकड़ रहेगी आपको। उसके हाथ से सब कुछ छूट चुका है। उसको कितने लोगों ने कहा कि हम आपका ऑपरेशन करा लेते हैं, हमारी किडनी ले लो। वो क्या कहते हैं, नहीं भैया मेरे लिए ये राधा और ये कृष्ण है, मैं इनको बदल नहीं सकता। What does that mean? What kind of means? Keeping it at the highest priority, not myself. ये कितने लोग कर सकते हैं? हमारे तो नाखून में दर्द है तो हम भगवान को कहते हैं भाई ये थोड़ा ठीक कर सकता है क्या? बिल्कुल देखिए, जो संत होते हैं ना, जिनका मैं वही कहता हूं ना, संत का मतलब क्या है? जिसका स्वयं का अंत हो चुका है। और उस व्यक्ति को अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा कि इसका अंत हो चुका है। इतना विनम्रता कैसे आती है किसी में? और देखना, लोग बड़े बड़े लोगों के सामने नहीं झुकते, विनम्रता के सामने झुक जाते हैं। बड़े बड़े जटिलता के सामने नहीं झुकते, जो सरल है उसके सामने झुक जाते हैं। कठिनता के सामने नहीं झुकते, जो तरल है उसके सामने झुक जाते हैं। कुछ झंझट होता है उनकी वीडियोस देखने के बाद, उनको देखने के बाद कुछ मैं तो गुरुजी कहता हूँ अंदर ऐसे में ऐसे झंझट होता ऐसे है। लोगों के वीडियोस घर घर में चलने चाहिए। और वो आ, एक एक चरम सीमा होती है, वहां तक पहुंच जाता बिल्कुल। आप है वो। एक अद्भुत, आप अगर उनको देखोगे तो अद्भुत शांति का एहसास होता है आपको। क्यों बिल्कुल, होता है? हाँ बहुत। क्योंकि जो शांत है उसे देखोगे तो आपको शांति लगेगा। आप देखो, जैसे आप कभी अगर कैलाश पर्वत की तरफ जाओ, वो पर्वतों को देख के ही आपको शांति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं इतना शांत है कि उसे देखते ही शांति का अनुभूति होती है। रास्ते में जाओ, अभी घर के बाहर अशांत हो जाते हो। क्यों? क्योंकि इतना अशांत चल रहा है रास्ता, उसे देख के आप अशांत हो जाते हो। Yes or no? The impact of my vision, the impact of my hearing, the impact of the things around me. So उसी बात ही आवाज, there is nothing wrong। और ऐसे व्यक्तियों की बातें सुननी भी चाहिए, क्यों नहीं? बिकॉज मैं यही कहता हूं, किसी भी बात जो आपको ऊपर उठाती है ना, वो सारे चीजों को सुनो। मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरी ही बातें सही है? फिर तो मेरे से बड़ा घमंडी कोई हो नहीं सकता। और जो कहता है ना कि आई हैव लेफ्ट माई ईगो इज द बिगेस्ट ईगोइस्ट, उससे बड़ा ईगोइस्ट हो ही नहीं सकता। तो आभा जी बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, लेकिन हाँ, ऐसे बहुत सारे स्पीसीज भी है नहीं जिनकी नहीं बातें आप गुरुजी, सुनोगे तो नहीं परेशान हो ये तो जाओगे। फिर जो गुरुजी अगर कुछ ऐसा होता है ना तो वो कनेक्शन सेट होता है अंदर से, अदरवाइज कहीं मन होता ही नहीं किसी को सुनने का। देखो, और एक सुनने चीज यही का होता है ना आभा जी, भगवान एक चीज बनाया है हमारे अंदर, चाहे वो एक जानवर हो, एक इंसान हो, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ए वाइब्रेशन, देर इज कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी। वो सबको पता है हमको। आपको अंधेरे में अचानक क्यों डर लगने लगता है? अचानक ये डरने लगने का कारण ये है कि क्योंकि वहां का फ्रीक्वेंसी कुछ अलग है। आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट दैट फ्रीक्वेंसी इज। आपने कभी देखा है कि एक हिरन दौड़ के जाएगा शेर के पास, बोलेगा फ्री फूड, होम डिलीवरी, यू कैन ईट मी नाउ? नहीं ना। वो दूर से ही उसे पता चल जाता है, वो भाग जाता है, बिकॉज इट नोज समथिंग कॉल्ड एज ए फ्रीक्वेंसी।
बिल्कुल वो फ्रीक्वेंसी डज नॉट मैच। किरण कोई स्कूल पढ़ने नहीं जाता कि शेर से बचना चाहिए, तो फिर उसे कौन सिखाता है? हु टॉट इट ऑल दैट? इट्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो हमारे अंदर भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, द सेम फ्रीक्वेंसी। इफ यू कनेक्ट टू दैट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो नेचर इज ऑलवेज डांसिंग, नेचर इज ऑलवेज डांसिंग। अगर आप देखोगे तो हर एक चीज को देख लो, वो नृत्य कर रहा है। आप बोलोगे कैसे ना, मैं बोलो यू जस्ट सी, इवन इन ए माइक्रोस्कोपिक व्यू, इफ यू सी एन एटम, द न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन ए वेरी स्पेसिफिक मैनर, they are dancing. There is always harmony in nature, but we see flaws. तो उसी भांति जहां पे we are not able to match that frequency, that means you have traveled beyond that. शायद आप उसके ऊपर उठ चुके हो, जहां आपको सत्यता दिखाई देने लगी है। जैसे गुरुजी मैं आपकी बातों को अपनी लाइफ में उतारती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जितनी बहुत अच्छी बातें सुनी है उनको लाइफ में उतार। तो मैंने आपको गुरु बोला हुआ है, मैंने गुरु तत्व को प्रणाम किया है। तो गुरुजी यदि मैंने दीक्षा ना ली हुई होती और मैं सिर्फ आपकी बातों को फॉलो कर रही होती, तो क्या मेरा उद्धार हो जाता इतने से? बिल्कुल, इसके बारे में भी आपको क्लैरिटी दे देता हूं। दीक्षा लेने का कारण यह होता है कि उनके द्वारा दीक्षित होके जो मंत्र को उन्होंने साधा है, उस मंत्र को आपको दिया गया है, जिसके जरिए आपको शक्तिपात होता है। वो शक्तिपात के वजह से आपकी साधना तीव्र गति से आगे बढ़ती है। उसके लिए दीक्षित होना जरूरी है। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ साधनाओं का बात नहीं करते, हम सीधा सीधा दिव्यता की बातें करते हैं। तो वही अष्टावक्र गीता में ये कहा गया है कि ईश्वर की वाणी में लिखी गई है, मतलब जो हमारे वेद है वो ईश्वर की वाणी है, वो किसी का लिखा हुआ नहीं है, वो ईश्वर की वाणी है। वो वाणी में ये कहा गया है कि जो ये सारे काम करता है लेकिन मुझे नहीं समझता, वो व्यर्थ है, और जो मुझे समझ गया उसके लिए वो सब व्यर्थ है। इट टॉक्स ऑफ द अल्टीमेट। अब जैसे गुरुजी ये प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि मैं अपने मुख से उच्चारित करता हूँ, जो नाम तुमको पसंद आए वो ले लो और उस नाम का जाप करो। और ये आवश्यक नहीं है कि मैं कंठी बांधू तुम्हें और कान फूकूं, तो मतलब इतना जरूरी नहीं है। जिस नाम को तुमने एक नाम पकड़ लो और मेरे शब्दों को उसके ऊपर चलो, तो क्या ये दीक्षा के बराबर होगा? या मुझे जैसे आपसे कहूं तो मैं आपसे पूरा दीक्षित हूं तभी उसको माना जाएगा, या केवल उनके शब्दों को पकड़ लेना या उसको फॉलो करना, आपकी बातों को फॉलो करना, शब्दों को पकड़ लेना और उस पर चलना, तो वो एज ए मंत्र हो गया ना? क्या उस मंत्र को इस तरह से क्रिया में लाना सफिशिएंट है, या फिर मुझे रूबरू सशरीर वहां जाकर उस चीज को लेना जरूरी है? चलो उसका भी उत्तर दे देते हैं। एग्जाम्पल, इट इज जस्ट लाइक दिस आबाजी। अभी के टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको समझा देता हूं, ठीक है जी। सिंपल बात है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, गुरु क्या है, उसके अकाउंट में पैसे हैं, भरे हैं, ठीक है। यू आर स्टेइंग फार ऑफ। वो कहता है कि तुमको मैं जो वाणी बोल रहा हूं उसमें जो शब्द समझ में आए उसी को लेके मंत्र बना के तुम जाप करना शुरू करो, वही दैट इज इनफ, तुझे मेरे पास आने की जरूरत नहीं है। यही है ना जी। सो सिमिलरली आप एक काम कर सकते हो, अगर मेरे पास पैसे हैं तो आप आके मेरे से लेके जा सकते हो, या तो आई कैन डू समथिंग कॉल्ड एज ए ट्रांसफर ऑनलाइन, राइट जी। जहां आपको कैसे यू गॉट द मनी, ये सामर्थ्य उनमें है कि वो कह सकते हैं कि मेरे शब्द भी मंत्र हो सकते हैं। तो वो सामर्थ्य को जिसने प्राप्त किया है वो बिल्कुल कह सकता है, क्यों नहीं कह सकता। लेकिन हाँ एक ही बात है, एक ही जगह पे मैं कहना चाहूंगा, वो एक स्तर पे जाके रुक गए, ही स्टॉप्ड एट वन प्लेस। वो राधा और कृष्ण में रुक गए, वही तो। बट व्हाट अबाउट द अल्टीमेट?
क्योंकि Okay. देवता, भगवान, ईश्वर, ये 3 अलग अलग चीजें हैं। अलग अलग, हाँ। देवता, भगवान, भगवान का मतलब होता है भगवान, मतलब जैसे धनवान, ज्ञानवान, बुद्धिमान, मतलब ये जिसके पास होता है वो, जिसके पास धन है वो धनवान है, जिसके पास बुद्धि है बुद्धिमान है। उसी तरीके से भगवान का मतलब क्या है? भग जिसके पास है उसे वान, मतलब द क्वालिटीज ही हैज, उसे भगवान कहते हैं। भग जो है यहाँ पे रूट वर्ड है संस्कृत का। ये भग जो शब्द है, जिसके पास 6 तरीके के चीजें हैं, 6 क्वालिटी शुड बी देयर, और उसमें अगर ये 6 तरीके के क्वालिटीज हैं पूर्ण रूप से, वो भगवान है। लेकिन जो ईश्वर है वो इनसे परे है। अरे सो हम भगवान का नाम लेके लेते क्या करेंगे? हम भगवान के लोक चले जाएंगे। क्या हुआ? वो मुक्ति। हमने लास्ट टाइम समझाया था ना कि मुक्ति क्या है और कैवल्य क्या है, मोक्ष क्या है। तो इस स्तर से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। किससे मुक्त हो गए? संसार से मुक्त हुए। कहां गए? प्रभु के धाम चले गए। लेकिन क्या हम वहां टिक पाएंगे? फॉर हाउ लॉन्ग? So we just don't talk about locus, we just don't talk about places where you will reach. How we say end the game. हम ईश्वर का बात कर रहे हैं। So अच्छा, अच्छा गुरुजी, जैसे कृष्ण और राधा की भक्ति करी तो हम राधा के लोक में पहुंच गए, और हमने राम की भक्ति करी तो हम साकेत धाम पहुंच गए, शिव की भक्ति करी तो हम कैलाश शिव धाम पहुंच गए। तो इतने मतलब फिर जब हमारे पुण्य क्षीण हो गए, जब वहां पे हमारा कार्यकाल खत्म हुआ, तो हमें वापस फिर आना पड़ेगा पृथ्वी पे, या फिर हम वहां से भी ईश्वर के लोक जाएं? एक सेकंड, कैन यू, आप एक बार सवाल पूछ सकते हैं क्योंकि बीच में मेरा साउंड कट हो गया। ठीक है। हाँ जी, फिर से बोलिए। जैसे मैंने राधा कृष्ण की पूजा की तो मैं राधा के धाम गई, ठीक है। ओके और जब ओके मैंने राम जी की पूजा करी तो मैं साकेत धाम गई, ओके और जब मैंने शिव की पूजा करी तो मैं कैलाश धाम गई। ओके फिर वहां पर जितने मेरे पुण्य या जितनी मैंने अर्जन किया था, जितनी अपने उससे पावर को अर्जित किया था, वो वहां समाप्त होने के बाद फिर मुझे इस पृथ्वी लोक पे आना पड़ेगा, या वहां पे कुछ ऐसे कर्म कलाप के अलावा मैं ईश्वर लोक में पहुंच जाऊंगी? बिल्कुल है। देयर इज ए हाँ, पॉसिबिलिटी। हाँ, यही चीज बताइए आप देयर इज ए जरा। पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी क्या है कि मैं वहां जाने के बावजूद क्या मैं सिर्फ और सिर्फ वो शांति में लिप्त हो जाता हूं, या सी अल्टीमेटली आवाज, आई विल टेल ओनली वन थिंग, आप चाहे कोई भी लोक में चले जाओ, इफ यू हैव नॉट रियलाइज्ड योरसेल्फ, आप वापस आओगे ही आओगे। माइट बी आप वहां जाने के बाद यू रियलाइज योरसेल्फ तो नहीं आओगे, बट अनटिल अल्टीमेट क्या है? अल्टीमेट यही है कि मैं ही हूं वो। जब ये अनुभूति आ गई, अब जाओ ना, कोई भी लोक में जाओ, यू आर मास्टर ऑफ ऑल, यू गो वेयर एवर यू वांट टू गो। तो फिर उस चीज को यहीं से स्टार्ट क्यों ना करें? हम इसीलिए यहीं से शुरू कर रहे हैं। दैट्स व्हाट वी से ना आबाजी, हरि भाई क्या कहते हैं कि जहां सब समाप्त करते हैं हम वहीं से शुरू करते हैं। दैट्स व्हाट आई सेड बिकॉज until you reach the ultimate there is no fun. वो टेम्पररी फन है सब, अगेन इट्स लाइक कमिंग एंड गोइंग अगेन आफ्टर सम लेकिन टाइम। जी बस एक छोटी सी बात और, जरा सा टाइम और लूंगी मैं, बिल्कुल। कि ये तो हो गई चरित्रों की महिमा, मतलब ये देवता जो है उनकी महिमा। एक रामचरितमानस में एक चौपाई भी आई है कि नारद जी ने उनसे कहा है कि मेरे साथ की वजह से आपको इतना कष्ट पृथ्वी पर आकर भोगना पड़ रहा है, तो मैं आपसे एक वो चाहता हूँ, मेरी एक डिमांड है, मांग है आपसे। तो बोले ऐसी कौन सी प्रिय चीज है जो मैं तुम्हें दे नहीं सकता, बताओ। बोले जितने भी नाम हैं आपके, आपको कई नामों से जाना जाता है, लेकिन जो राम नाम है ना, इससे ज्यादा वैल्यूएबल और पावरफुल दूसरा कुछ होना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा यही नाम सबसे ज्यादा
तो क्या सिर्फ राम नाम भी हमको ईश्वर के लोक तक पहुंचा सकता है? उसकी पावर राम उसकी पावर मतलब यहाँ से तो बहुत ज्यादा है, तो क्या अकेले राम नाम से भी मोक्ष प्राप्त हो सकता है? ओके, अगेन द सेम थिंग, वहीं पे हम फिर आते हैं। एवरीथिंग विल टेक यू टू ओनली वन एंड वन रियलाइजेशन। राम राम जपते जपते जब आप राम बन जाओगे, राम इज नॉट जस्ट अ नेम टू बी chanted, it is to become that। आपने वाल्मीकि ऋषि का नाम जानते हो, वो पहले क्या थे? दस्यु थे ना। सो वो क्या हुआ, राम का नाम भी नहीं आता था, तो क्या बोलने लगे? मरा 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 मरा। बट व्हाट हैपेंड टू हिम? देखो, हमको देखो, हम कहते हैं हम अच्छे लोग हैं और राम राम सुबह सुबह कहते हैं, कोई बदलाव नहीं आ रहा है। वो एक डाकू थे, लेकिन उनमें इतना बदलाव आ गया। व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि हम कहने के लिए कहते हैं, उन्होंने बनने के लिए कहा। हम क्यों कहते हैं? जिस दिन वो शब्द का मायने हमें समझ में आ जाएगा। तो वैसे आभा जी, आप जानते हो ये कल्प में कितने बार रामायण हो चुके हैं? कई बार, बहुत बार राम आए गए, वो अलग चीज है, लेकिन राम नाम के महत्व की बात। हाँ, और कई कल्पों में 6 कल्प तक तो काकभूषण जी और उन्होंने सुनी है ये, और हर कल्प में राम आए, वो अंगूठी डाली है, हनुमान जी ढेरों अंगूठियां हो गई थी। तो ये कल्प में कम से कम 2 लाख से ज्यादा बार रामायण हो चुका है। आई विल गिव यू मैथमेटिकल कैलकुलेशन फॉर दैट, डोंट वरी। अगर वो चाहे तो मैं आपको प्रूव करके दिखा सकता हूँ कि ये है। नहीं गुरु जी, इसकी क्या जरूरत है? मैं तो मेरा तो सेंस बस इतना सा हाँ, जब आप है। नाम लेते हो राम का ना, राम का नाम अल्टीमेटली व्हाट डज इट टेक? आप देखिएगा, राम का नाम स्पेशली जब कोई मृत शरीर को भी लेके जाते हैं, तब भी वही कहते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य बोले मुक्ते होसी। क्या कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले ही मुक्त होते। मतलब क्या है उसका? कि राम नाम सत्य है, लेकिन अगर तुमने सत्य को जाना तब तुम्हारी मुक्ति है। So what is the truth behind the name called as Ram? और हमारे मूवीज में तो रामू काका बहुत फेमस है, राम को रामू काका बना दिए। नहीं सो हियर आभा जी, एक ही चीज है, आप राम का नाम जपते 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 जपते, जैसे मीरा का केस देख लो, वो कृष्ण 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 कहते कहते कृष्ण में ही हो गई। क्या हुआ उसे? मीन्स दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। आप राम 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 कहते कहते उसमें विलीन हो जाना, मीन्स देयर इज नो यू लेफ्ट। आपका अस्तित्व ही नहीं है, यही मोक्ष है। मिट जाना ही मोक्ष है। क्योंकि राम में, राम के फिगर, राम सीता और वो दशरथ पुत्र, इसको इतना ज्यादा नहीं जितना कि राम के नाम को महत्व दिया गया है। बिल्कुल, तो वो नाम ही मोक्ष क्योंकि है। नाम जो शरीर है, राम जो शरीर था वो तो आ रहा है जा रहा है, लेकिन नाम जो है वो रह गया। मोक्ष कारक। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आभा जी। थैंक यू वेरी भाई। So now we have the younger kids coming up. Thank you, Abhaji. Thank you very much. Yeah, Chidvilas, please unmute yourself. नमस्कार गुरुजी। नमस्कार, बोलो क्या कर सकते हैं आपके लिए? लास्ट वीक एक्चुअली मैं नहीं ज्वाइन हो पाया, मतलब लास्ट वीक का एक डाउट था मेरे पास। ओके प्लीज। जो आपने करके बताया तो अर्थ स्टार चक्र, ओके, जो हम कर रहे थे, मतलब बीच में ऐसे हुआ कि मुझको ना पूरे प्लैनेट्स दिखने लगे, मतलब पूरा स्टार्स वगैरह वगैरह दिखने लगे। ओके,
मतलब ये क्यों क्यों हुआ मेरे साथ? Okay, so why did it happen? Okay, that's a very simple thing. You might have been hearing this term very much on the internet. What you call as astral travel. हाँ. सुना है ना ये? So what is astral travel? Means traveling into the astral system. Astral system क्या है? जहाँ पे तारे, नक्षत्र, ग्रह, नक्षत्र ये है. That's what it is, right? So what happens is at times when you get into that kind of the chakra meditation जो आपको बताया गया और अच्छा है, it's good that you did that. So when you are doing that, at times what happens is the body is still at rest. But there is something that is called as the Atman that has started traveling. वो जिस जगह पे पहुंचेगा ना, you will see all that. Because this physical body will not experience it because it is sitting at a one particular place. But that astral body of yours, it can travel anywhere it wants to. So when it is moving to different dimensions, that kind of experiences will come into play. So that is absolutely fine. There is nothing wrong in that if you see that also. It is just that you have traveled that. Now you say, ये होना था क्या? Is it required? Now let me tell you the secret behind that. That is how astronomy came into existence. Because the Rishi Munis didn't took a rocket to go into the galaxies to measure the distance between each other. Then how did they know? That was possible because of what you experienced as a glimpse of that. It's just a minute sand of it. I just saw that. But just think of if your understanding grows very deeper into that kind of space. What will happen? You will not only see them as a vision, you can feel them as an object. Then you become a scientist kind of a thing and you now do your experimentation on that. हमारे ऋषि मुनि कोई और नहीं थे. Those were also the scientists only. But when they talk about, you put their name into religion, they say, oh, it's all mumbo jumbo. No, they were also the first scientists क्योंकि उन्होंने जो उद्भावन किया है अभी भी ढूंढ रहे हो तुम. So that itself is like, Chidvilas, these are all the ingrained qualities of the mind. मैंने कहा ना कि this is the same thing that will liberate you. This is the same thing that can bind you also. So when all these things are coming into play, the slowly, the more and more you do your sadhana on that part. क्या होता है? उसमें ऊपर ना clarity आना शुरू होता है. See, it is just like this. If you want to become an engineer, what do? You go to engineering college. If you want to become a doctor, you go to that. Similarly, when we are doing all through these sadhanas, there will be a particular thing that will attract you. Right? For example, why I'm very much fascinated about this galaxies and all that. What do? You start doing your sadhana in that way. कुछ लोग होते हैं कहते नहीं मुझे शक्ति चाहिए, मुझे पावर चाहिए. अच्छा क्या करोगे? अच्छा जाके मैं चेतनी साधना करता हूँ. कर ले, क्या मिलेगा? नहीं, रात में बिना चश्मे के भी दिखाई देगा. मैं बोला वैसे भी लाइट लेके जा, इतनी साधना करने की क्या जरूरत है 25 साल तक? नहीं. लेट्स डू वन थिंग. कोई एक पिचासिनी को साध देता है, सारा कार्य कर लेगा. अरे why are you going into the least of the things? But बुद्धि जितनी उतना ही करेगा ना वो. Now, what is the requirement? अभी जो आभा जी या तो फिर सुमा जी जो पूछ रहे थे, the importance of one person who can guide you in the right path यहाँ पे कार्यरत होता है. That he will say you, why are you going for a निम्न स्तर का जो शक्ति है उसके पीछे क्यों जा रहा है? There is something better for you out there. And then you will see in your sadhana, first and foremost thing, you will get connected to a particular deity. So when you start doing their sadhana, it will guide you further. That might intensify in the form of you being able to see things beforehand, जो जैसे आप कहते हो ना, the development of the sixth sense kind of stuff. Or it can be that astral travel in a very amazing way. For example, Chidvilas, like my mom always gets astounded. You know why? I will sit here, I will call her and I say what is happening there. Okay, So तू कहाँ आ गया यहाँ पे अभी? लिटरली वो क्या कर रहा है, उसके बाजू कौन बैठा है, कौन आके गया, बाहर कौन है अभी? So she says, what are you doing? I said, नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रहा था तो क्या कर रही है. Now people have the same thing called as cameras. वो फोन पे देख लेते हैं सब कुछ क्या हो रहा है. I don't have a connection in that way, but I have. वो कहते हैं ना कि जैसे now in your navigation system में क्या कहते हैं?
GPS, right? GPS. GPS. We have also installed a GPS within us, God positioning system. So wherever the antenna moves, I want to see that, okay, it says that, okay, here it is. Now zoom in. Okay, so what is happening there? So that God positioning system is there. So all these things are very fascinating things, Chidvilas. Especially when I was your age. Oh, sorry, मैं उससे भी कम एज में था. But at that time, many things come into play. It's just like ना कि आप जाते हो कि there is a buffet of things kept. अरे ये भी खाना है, वो भी खाना है, वो भी खाना है. But what do you do? Even despite testing so many things, you stop at one particular thing. क्या होता है? पसंद आ गया, नहीं यही खाना है. Similarly, there is a buffet of experience that will come to you. But here you should realize, you should know what is good for health, what is not. So similarly, whenever you are experiencing all these things, you can ask me, and what you experience is absolutely fine. There is nothing wrong in that. That is just a part of it. Okay, good. Okay. So it's absolutely fine. So go enjoy your free travel to the universe. बिना टिकट के घूम रहे हो और क्या? Yes, Guruji. Okay. So anything else? गुरुजी एक्चुअली ना हमारे कॉलेज में एक क्वांटम फिजिक्स सर आए थे एक बार. ओके चिदविला, जस्ट अ सेकंड. तुम कॉलेज का बात करो, कोई कॉलेज का एचओडी फोन कर रहा है. जस्ट अ सेकंड. ओ कट गया. ओके. अरे भाई प्रसाद एचओडी एमआरईसीडब्ल्यू. Yes, Malachi. सो कैन यू प्लीज मैसेज हिम वंस? Okay, fine. Malachi. वो 2 बार कॉल कर चुके हैं. या चलो चिदविलास, नाउ लेट्स गो टू द फिजिक्स क्लास. हाँ, तो फिजिसिस्ट आए थे. ओके. Oh, so let me help you with that. Yeah, so you can unmute now. Yes, Guruji. So actually we were having a little conversation after the class. Okay. So after the conversation, I was like going to like touch his feet and take some Ashirwad. Okay. So he was like, no, don't do this. So he starts saying me that when you and I are same, why to bow to someone else? Amazing, na? So even after, like, so many people say that whoever is like above you or who has higher knowledge than you, we have to bow to them. So my intention is we need to take like whatever energy they have, a bit of energy through them. Absolutely. But in his sense, it is that everyone is equal to God, and why should we bow to someone else? Okay, that's good. So it is for saying or it is being? Like what to really do? I don't mind if you touch my feet. See, the reason is, I also say the same thing. There is no difference between you and me. So when I said that there is no difference between you and me, who is bowing down to whom? Yeah. Means still I am seeing a difference, that you are that, I am this. That's why I'm saying you don't bow down. Means what? I am just saying there is no difference between you. But deep down, I still have that doubt that you are a different entity, I am a different entity. Can you see? That's what I said. Is it just for saying or it is the truth? See, बोलने के लिए बहुत कुछ बोला जा सकता है. But becoming, you can talk 1,000 things about sun. But can you become that sun? Because if in order to become that sun, you have to burn like the sun. Yes. So that's how it is. वो कहना ही वो सवाल को रोक देता है. So people go, झुकना, झुक जाओ. नहीं झुकना है, मत झुको. मैं आपको क्या बुलाऊं? कुछ भी बुला ले. So how does it matter? A name, a way of speaking, how does it matter? Then I'm still lost in the matter only, right? Yes, Guruji. Like, it's going to be a phenomenal journey. Continue that, and it is good. See, even if people deny to touch their feet, don't stop yourself. Because as you rightly said, there might be something, a good energy. That energy might propel me to the right spaces.
और मुझे तो कहीं उल्टा लगा। चिलदास, मुझे ये ना लगा कि उन्होंने आपको देखा और उनको लगा कि तुम्हारी ये ऊर्जा ज्यादा है, कहीं बल्ब फ्यूज ना हो जाए। Guruji. It's not just that, it's just I'm taking it in a lighter way, but it is a good thing. The way you are thinking, that itself is commendable. क्योंकि ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं ना, by looking at you, they are just thinking the same thing. कि काश हमारा बच्चा भी ऐसा ही हो जाता। That at this age you are asking these questions, and at the same time when you said that, I thought of, okay, whoever teaches you something, you feel like bowing down themselves because they know something else, might be a higher energy, whatever it is. Whatever it is. किसी के सामने झुक जाने का मतलब ये नहीं कि मैं छोटा हो जाता हूँ। I just bowed down not because of that human, I bowed down because of that knowledge, that wisdom. So that is nothing wrong in that. और ऐसे तो आप जाके हर किसी के पैर तो नहीं पड़ते ना। What does that mean? That itself gives a lot of clarity that no, there is something there which makes me feel like that and I bow down. इसीलिए कहते हैं ना कि वो दर दर नहीं जहां सर ना झुके, और वो सर सर नहीं जो हर दर पे झुक जाए। समझ में आया? Yes, Guruji. वो सर सर नहीं जो हर दर पे झुक जाए, और वो दर दर नहीं जहां सर ना झुके। ये कौन सा सर है जो हर किसी के सामने झुक जाता है? वो सर नहीं है। और जिस दर के सामने आपका सर ना झुके, वो दर नहीं है। इट्स नॉट ए राइट प्लेस जहां आपका सर अपने आप ना झुक जाए। That's how it is. Okay, so go explore the galaxies. ज्यादा कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो हमें भी पास ऑन करना। Yes, Guruji. And Okay. one more, there was a major doubt like through the thing. So Okay. that is how to desire for non-desireness. You should Does not it desire for not desireness, Like because that generally. itself becomes another desire. You see, Yes, Guruji. तो इस चीज को समझो एक बात को। Let's say again, I have given this example to other people earlier. I believe like this would work perfectly for you. Your mom is also here. She might become a testimony for that. Can you tell me, as a child, Chidvilas, who used to be a child some time ago, what was his favorite toy? Maybe some cars or balls or something. Some cars. Okay. So at that time, you played with the cars and you loved the cars, the collection of it, right? Yes. Now, just let's say you seem to be a good person. I don't know like whether it will work perfectly or not, but generally what happens is, if I love this pen, let's say I love this pen. And the other thing is, some people love their pain also. So they don't leave it. So I have to be very careful whether I'm saying it pain or pen. So let's say I love this pen and I like it, and so I'm playing along with it. And now suddenly somebody comes and says, give me that. Will I give it? No. Especially if it is my sibling. Okay, the sibling rivalry. Okay, so if there is my sibling, दूसरे को दे दूंगा, इसको तो बिल्कुल नहीं दूंगा. So in such case, what happens is, there was a time where you loved to play with that cars, and if somebody took it away, you were ready to fight with it. उसके लिए झगड़ा भी करते थे. Yes, Guruji. You fought, you cried, you complained, all that you started doing, and it was your prized possession. Yes or no? Yes, Guruji. Where is that car now? For the car that you fought, for that car that you cried, for that car you complained, for that car was your most possession, where is that now? God. Did you desire that I should not be attached to this car, or you just grew above that desire? Okay. Yeah. What happened? The child grew, the attachment with that car automatically vanished. You grow in your spiritual level, all this attachment of this world will vanish. You won't have to work on that. You don't even have to think
that I should not desire. The desire of not desiring also should not be there, because it will automatically vanish like this. How? So don't even desire to not desire. Grow. Ultimately, automatically, वो कहाँ छूट जाएगा वो पता भी नहीं चलेगा. And that's the path of freedom. क्योंकि मैं अगर जानते हो ना, your mind reminds all the things that you want to forget and forgets all the things that you want to remember. So that's how it works, Jivilas. It's not about leaving this world. It's not about aloofing yourself. No, grow yourself in such a beautiful way that automatically everything moves out effortlessly. Okay? So Okay, Guru. keep with it, and surely we all can see, actually, everybody can see a great thing happening. Good. Thank you for being and here and asking the questions, and actually the right questions. Good. Thank you so much. Yeah. Thank you, Guruji. Thank you. Thank you, Chidvilas. Thank you, Bhaiya. Deepika ji, please unmute yourself. Pranam Mahadev. Pranam, Deepika ji. Welcome back after a Mahadev. long trip, huh? Yes, I couldn't connect, only 2 sessions, Mahadev. Rest all I was connected. Yeah, we were all connected through the pictures that you were posting. Not only that, Please Mahadev, go I was ahead. attending the sessions too. Okay. Actually, I just wanted to ask one question. I think you answered it before, but until it is for me, sometimes I don't remember. So forgive me for that. विश्वरूप दर्शन का मतलब क्या होता है? मतलब when Krishna gave Vishwarup darshan to Arjun, was Okay. it like Arjuna saw Krishna everywhere or Arjuna saw himself everywhere? What was it actually? The first one. Okay. That there was no one else except that one. And when he looked at himself also, he looked like it. Okay. So in the sadhana we do, I always ask you on particular sadhanas, I ask you to decorate yourself very well. Yes. Make sure you are also becoming like that. What does that mean? Means when you look at yourself also, you see the depiction of the same deity reflecting in you, because ultimately you will become that. Why do I ask you to even dress like that? The reason is because the physical eyes are yet to transcend beyond the physicality. So that at least by looking at that, what happens? It says like, okay, now I'm able to connect with that. And ultimately, Deepika ji, let me tell you what happens. I have seen many people transforming in this room. Those who started doing a particular sadhana, by the end of the sadhana, they started looking like that. मैं कहता हूं आप शिव की साधना करो, और आप अगर शिव के जैसा आपका चेहरा बदलने ना लगे तो कहना. आप विष्णु की साधना करो, अगर आपका चेहरा विष्णु के जैसे ना बदले ना तो कहना. Because ultimately, what is that? In pure science, you have to understand one thing. Your mind, your thoughts are controlling the cells and the activities of the cells, right? So ultimately, what it is focusing, if you are focusing on a disease, the disease is created within the body. But if you are thinking of the divine, the cells start transforming itself into that radiation field. In that radiation, what happens is, how many times have you seen your own self before the sadhana, and immediately after the sadhana, you go and watch into the mirror and you say, "Ye kaun hai? What is this glow on this face? What is this spark on this face? Why am I?" Or aisa khali, I'm not talking about the shine on the face. At times, the features of the face will change. Yes, sabke experience mein. It has to come into your experience. So Deepika ji, what happened there? The greatest shock was not seeing Krishna all around.
The greatest shock for Arjuna was when he looked at himself and he looked like Krishna. Or else, what would have happened? Still, there would have been a difference between Krishna is something else, I am something else. Then how is it Vishwarupa? Yes, this is what I was having the doubt, Mahadev. So Like what he has he seen saw him. is exactly what Krishna showed him. That is everything. Wherever you are looking, you are just seeing only one thing, nothing else. Now, do you think like it was just looking like a face? That's what we depict so that the mind can understand Vishwarup kaisa hona chahiye. It has 1,000 hands and 400 heads and all those things. No, it's not just that. It means a very simple thing. Wherever I'm looking, I can only feel and experience that divine force. That's it. Yes, और अगर आपके साथ ये अभी हो सकता है, if this is happening to you right now, if this has happened to you some time ago, I can say you have experienced that. You go into the mountains and you just start speaking, you just start shouting, you just say, wow, what is this? That very moment, you don't see yourself anymore. You just see and you become that. And then what happens? That becomes a part of you. When you went to your trip out there in the European countries, when you saw the mountains, you saw the places, what do you say? Agar kahin swarg hai to yahi hai. If there is a heaven, it is. Yes. Can you see? When you are seeing that, you lost yourself in that beauty. But now that beauty is lost in you. You came back and it has come as an experience to you. इसीलिए लोग पूछते हैं, जब कृष्ण को अर्जुन ने देख लिया फिर जिंदा कैसे रहा उसके बाद? Why was he still alive and why did he fought? This is why it is. It experienced, it knew the thing, it realized, and then continued to live. So Deepika ji, all that he saw was that only one. No one else was there. Okay. This was I had this confusion since long time. Just by seeing something, we don't change that easily. So he must have experienced something. What was that? So it is beyond seeing. Na? Yes, Mahad. Now when you said that he experienced everything as himself, that should go. That's what I was. Okay. Because like I already told you, Mahadev, those tiny conversations that they happen, probably they all came up in your sessions. Either in your sessions or somewhere, even on YouTube or in some books, whatever it may be. But at that moment, when I was looking at something else, that conversation is happening within me, that I can never forget, Mahadev. Like you said, Absolutely. that became my experience. So. Can you see, Deepika ji, the same answer that when I was answering Sumaji also, she asked like, does the Guru leave them or something as such? What did I say? I say, we obviously travel with you in the voice. Yes, Mahadev. Wherever you go, whichever place you go, what happens to you? Why are you remembering those words? Because it still works with you. Is along with you all the way. Mahadev. Yes, Mahadev. Like I already told you that the nameplate that I saw on the next car that was coming to me. Okay. It was written like Shiva's. So usually in US, it's rare to see something like that. At least in these last 13 years, I have never seen that same nameplate. So I was wondering, when I was traveling to take a flight to Europe, I saw the next car had a nameplate which was named as Shivas, SIFVAS. So I was wondering, like, okay, like you promised, he is going to take me, not that I am going to take him. He is going to take me everywhere. He is with me always. So that was one thing that I really felt good about. And Yes, Mahadev, in spite of all this, one question, please forgive me. I know I am a big fool and I make a fool out of myself every time again by asking such questions, but still I don't mind because it's only you that I'm asking to. So in spite of experiencing all these things,
when I hear like you're actually going to some place and we have an opportunity to go with you and I am not So able to go. Haribhai has actually when- kept the video ready, actually, you see, to burn you people more. Mahadev, then I'm not going to watch it because I don't want to cry. And I don't want to cry out of sorrow. I want to, I don't know, Mahadev. Even you know, Deepika ji, we all were crying that you went to European trip and you didn't took us. Oh. Mahadev, that is no, nothing divine. No, see, but everybody is crying. You when see, they look like smiling, but they're all crying actually. No. राजन जी को देखो कितने दुखी लग रहे हैं मुस्कुराते हुए. If it ये was अकेले कैसे चले गए दीपिका जी ऐसे हमको छोड़ के. Nahi, Mahadev. This is not about someone traveling. It is a chance to be with you in some Now, divine the place. first thing That that is you have what to makes say. difference. First thing you have to accept what you said just a minute ago. You said whenever I was talking about Shiva, Shiva showed up. Then you say wherever Shiva is going, not taking me. तो कौन सा सही है इसमें? नहीं महादेव. देखो राजन जी कह रहे हैं he is happy for her. Okay, thank you राजन जी. हम तो बड़े दुखी हैं. आप ही एक ही हो जो उनके ऊपर कृपा बरसा रहे हो. देखो सब कितने दुखी लग रहे हैं सब. वाणी जी को देख लो, शिवा गुरु जी को देख लो, अश्विन जी को देख लो, अदिति जी, रेवती जी, विद्या सुंदरी जी, प्रीति जी. Everybody is feeling so sad, you see. Mahadev, my question. Please let me ask my question, yeah. Mahadev, and Okay. also I want an Answer the answer. question. Yes, Please. yes. Answer the Answer, question. please. मैं कैसे लूं is like how do I change myself that I don't feel sorry for things that don't happen with me and just be happy about what has happened, because sometimes I really don't understand. ये प्रारब्ध है, इसकी वजह से मैं गुरु के साथ भी नहीं बिता पा रही हूँ मेरे वक्त. Going to Mahadev, if I was given an option like you want to go to Europe or you want to go with Mahadev, I definitely would have chosen the second one. Okay. Chalo, ठीक है. So if you have chosen the second one, sometime you will also travel with us. What is the problem? Why, Mahadev? Like, because I am here, I don't know when will that become a possibility for me. There will be so many opportunities that I didn't will even miss. knew that Is you it were because sitting of there? my... Despite sitting there, you can still be connected. You never knew that. So if that happened, everything happens. See, I saying that God is far from me creates the distance. I saying I don't know kab hoga. See, देखो, I'll tell you a beautiful thing about that. One is waiting. ठीक है, एक होता है प्रतीक्षा करना, दूसरा होता है मुझे पता है वो आएगा. What is the difference between these two things? I am waiting that he will come. I know he will come. दोनों ही waiting है, but there is a huge difference between these waiting. Yes. कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, अब आएगा, तब आएगा. You keep on distancing that. But you take the case of Sabri or whatever, whichever character that came into Ramayana, or you take the Kubja or whatever in all our Puranas. They simply just said one thing. वो आएगा, वो इंतजार में नहीं है वो. They know that it will come. They are not just waiting that when will it come, will it come. No, they said it will come. So every single day, what she used to do? Used to be ready. Ram आएंगे. She was not saying कब आएंगे. Ram आएंगे. So which kind of waiting is yours going on? I am waiting, he will come. I know he will come. And what do you think has more power? Second one. So what do you say? हमें भी यकीन है, हम भी यूरोप जाएंगे इसलिए हम रो नहीं रहे. हम कहते हैं हम भी जाएंगे. So we are not crying now. महादेव, वही मैं बता रही हूँ ना महादेव. There is a
huge difference between two things that you are comparing. So, I mean, at least for me. So you have to understand that part. शबरी को पता था कि राम कहाँ पैदा होने वाले हैं? Did she even know who Ram is? No idea. Never seen. Never heard of. But only once the Guru said, तूने मेरी इतनी सेवा की है, तुझे राम मिलेंगे. What did she do? There was no question after that. She said only one. उसने कह दिया है तो हो जाएगा. If he has said, it will happen. Okay. तब तक मैं पत्थर बन के पड़ी रहूंगी जब तक राम नहीं आते. अहल्या, ये नहीं कहा कि मैं 25 दिन 4 घंटे 3 सेकंड हो चुके पत्थर बन के. कब आओगे? 6 महीने 10 दिन 12 घंटे 33 सेकंड हो चुके. कब आओगे? No, that's not what it is. He said, if it is said, it will happen. So what do you say? All are listening, actually hearing, they're saying, God mode में तो हो, कम से कम God का आवाज तो सुनाई दे. So what did you say? We are still waiting, actually. After listening only, we'll move to Soumya ji. उनका I'm हाथ unable कब से to- ऊपर रखेंगे, उनका हाथ भी दर्द होने लगा होगा. Until it doesn't come from inside of me, there is no point saying it just for the namesake. No, like, Very good. So कोई अच्छा मुहूर्त देख के बोलूं? नहीं, ऐसा नहीं है सर. So what do you think? Like it will Because- happen or not happen? It will happen. It will happen. बस यही सुनना था हमको. Okay. 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 Thank you so much. Thank you, Deepika ji. Thank you, Thank Deepika. you. Thank you, Hari. Thank you. Soumishri Garu, please unmute yourself. Pranam Gurudev. Pranam. I've raised my hand to say thank you to you. The first time when I sat in the meditation class, आपने शिव जी का दर्शन करवा दी. For the first time, I have seen him from the backside, wearing the tiger skin. It was amazing, wonderful. I don't know the words. And the meditation, it was awesome. When I was doing meditation, I've seen a lot of changes in my body, which I cannot express. And I felt like you are the one Guru for whom I'm searching for these many years. Thank you, Gurudev. Thank you so much, Soumya ji. So you will find me this way only. I will just be playful. I'll just shout. I will dance, whatever it is. But you have to accept me the way I am. That's it. I don't have a tiger skin, but I have this yellow dupatta. Chalega. And You are many sure? of you, if you don't know, she is mother of Chidvilas. Okay. So good. Even the same search goes, right, Soumya ji? People think that the student is seeking for the Guru. Is the opposite way around. We are seeking for the right kind of person to teach. The thing is, मिठाई का दुकान वाला है ना, there is a sweet shop. Sweet shop तो अच्छा sweet बना दिया है, मगर कोई खरीदने नहीं आया तो nobody comes to buy then. Wasted. So we came here, we have all these things, but no one is there to eat it. Nobody is there to learn it. Won't it be a waste of this coming?
Thank God, some people are there, those who have made sure that my arrival on this place is not going to be wasted. So I'm very, very thankful to those people. And I'm not worried about the people, those who left. I'm worried about the people, those who have stayed back. Because these people push me every single day. Now you have to carry. Now you have to carry. Now. So I'm more worried about these people now. कभी कभी लगता है बड़े जिद्दी बच्चे हैं, कुछ भी कहे वो नहीं जा रहे, गुस्सा करने से भी नहीं जा रहे, गाली देने से भी नहीं जा रहे, रुलाए तो भी नहीं जा रहे, हंसाए तो भी नहीं जा रहे. So thankful to those people actually. And the kind of things that I want to teach, if you just talk to Hari Bhai at time, every time he gives me a call, I talk about one particular process. Every time he calls, I talk about another process. Every time he calls, I talk about another process. He says, भाई ये कब सिखाओगे कब? मैं बोला सीखने वाला कौन है? Who is ready to learn all this? When I'm talking about all those sadhana, that means I want to give it, but where is the taker of it? इसको लेने वाला कहाँ है? See, it rained and it just went into the drain. What is the fun in that rain? So good. If you have said that word, as many people have spoken earlier, that if I am the answer to the question that you have been seeking, I can only assure you one thing. I will never prove you wrong. Thank you. I'll stick to what you have seen or expected. But मैं ऐसा ही, and I will be like this. आप कुछ भी कर लो. हाँ, ये कपड़े बदल देते हैं भाई, क्या करेंगे, but चलो. So any questions with you, or you just wanted to share this? I just want to Thank you so much. Guru. Thank And you. we are so thankful that you did not appear alone. You brought a wonderful soul along with you. Thank you so much. And literally, if he is ready to walk with us, we are also walking along with him. Thank you, Gurudev. Thank you. Okay. Thank you. Thank you so much. Thank you, Samya. Revati ji, please unmute yourself. रेवती जी, कौन सी देवी की पूजा कर रहे हो आप? क्यों? आप बोलो मैं तो We can see the difference actually. So I have no question, but I want to share something is actually a miracle. On Sunday morning, I was just at home, and since morning I was feeling very uncomfortable. Actually, I was talking to Hari Bhai also that time, but I was just generally going about doing my work. By evening, I was extremely uncomfortable. I had started getting some chest pain, and I had my left hand paining. And I said to myself that I'm living under this syndrome of, nothing can happen to me. I live in that syndrome that mere ko kuch nahi hone wala hai. But I decided to take a better decision, and I went to the hospital. And I said, I want to get myself checked. So they checked me and they did the ECG and all that. I'm saying all this because faith is paramount. So, and all these processes that I've been doing, I just think everything pulls me out of all the problems that I get into. I have master of problems. I have to ask for discount from problems from God now. I have to say discount kar do problems. So I went to the hospital. They did my ECG. ECG was normal. But the doctor there said that kabhi-kabhi isme problem nahi aata hai, to hum wo blood test aur kar lete hain. So they did the blood test and I told the doctor everything is going to be normal. I'm going home. So I actually left the hospital and I came back home. The minute I came back home, in 5 minutes, I had got a call from the hospital saying that please come back. You need to get admitted immediately. That's something called, I didn't even know the name. There's something called troponin levels, which are extremely high.
And he says it is a definite coronary and cardiac problem. So you please come back and get admitted. So I had to rush back and I got myself admitted. तो वो लगाया वो सब IV everything they put in. They said tomorrow morning again we'll do the tests. They wouldn't allow me to move out from bed because luckily they didn't put me in the ICU because there was no place in the ICU. So they kept me in another high dependency room. And continuously, obviously, they were monitoring me. Then they said, no, morning we have to do your CT angio because we'll rule out ECG. This tropominin is 100% indication that there has been an angina issue. I said, Abhi karo, aapko jo karna hai. I don't know what is happening. Anyway, I don't understand medical terms. Next morning, and the doctor was so sure that there is going to be there's definite blockages in the heart. They did my CT angio with such a high level of troponin, which was 77 when the normal is supposed to be 11. Not 1% blockage has come. Not 1%. And when I slept at night that day, I actually just put my hands together and said to Hanumanji, said to Lord Shiva, I thought of you. And I just simply said, I don't know, it's just everything has to be normal. I'm going back home tomorrow. And I slept by 3-4 o'clock in the afternoon. They came back and told me, nothing, there's no blockage, nothing. We don't know why this has happened. So I said, do the test again. Your lab has failed completely. The laboratory only galat hai. And I walked out and I came back home. I don't know, the reports are still showing so high, but there's nothing. I'm fit and fine. I went to work also today. So I think I don't know, this has to be, medically, this has to be a miracle because with 77 troponin, it cannot be that there is no problem. But there is no problem. Now, abhi main kahan dhoondu problem? We hai hi nahi. You asked for discount, na? I really asked for discount. But pata nahi kaise, I have all my reports with me. I have shown it to 2 other cardiologists today. I said, ye dekho kya hai? They said, just close it, forget it, go to bed. And they've all, I don't know what to think. I don't know what to believe, but I'm just believing that something somewhere changed its mind and decided that there is going to be no blockage. It was going, I think, towards that, but it decided not to go there. आपको क्या लगता है? मुझे बिल्कुल वही लगता है जो आपने कहा. है ना, सच्ची. बिल्कुल हो सकता है. This is so आप बोल रहे हो miraculous. तो कुछ अच्छा ही बोल रहे होंगे ना. The only thing I regretted that day, one day, because I was in the hospital, I missed one day of going to the temple for my, doing that sadhana, that process. But I asked somebody else to do it on my behalf. And I mentally did what I wanted to do. But I missed one day. In all these days. That's okay. Okay, the God, I'm on holiday today. Yeah, मैंने बोला अभी आपने ही भेजा इधर तो अभी आप वापस लेके चलो जल्दी. So that I can do whatever I want to do. कितना मिस कर रहा होगा आपको, नहीं? I'm telling you, he misses me. But there is a joke came into the mind. एक आदमी बैठ के जोर जोर से चिल्ला रहा था, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान. तो एक साधु आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहा है? ना जोर जोर से चिल्ला रहा हूं ताकि भगवान सुन ले. तो साधु हंसते हैं और कहते हैं कि भगवान सुन लिया तो ठीक, लेकिन उठा लिया तो गया तू. But seriously, what is this, Mahadev? How? I don't know how I don't know whether there are any medical people here, but in the family. एक तो आपके सामने ही बैठ के बात कर रहा है आपसे. हाँ, वो तो I है. understand all that you speak. Yeah, but so how can this happen? Well, reports are saying something, the angio is saying Very simple thing. एंजियोग्राम का मशीन खराब होगा और क्या? जी में खराब नहीं. I think it decided not to do any investigation. So this decided to send me back. That is good, na? Yeah. And I've come back fresh and ekdam perfect. So nothing can happen to me. Next 50 years, I'm going to be fine. Revati ji, the only thing is, it is so good that
we have come across this place. But there is one person in this group जिनका नाम ओम प्रकाश चिंता है. He always attends the session. But his son passed away. His name was Arjun, right, Ashwin ji? Okay. So all that I say is all the breathing souls on this planet. Please pray for that soul that has moved out. May he find his way back. Yes. Very sad. So I didn't said that for you people to be sad. I said that so that you pray that he finds his way back home. Why death should always be a sadness? Why it should not be liberation? So may he get liberated. That's what. कि मुक्त हो जाए भाई. अगर कम से कम पूरा मोक्ष भी नहीं हुआ, कम से कम मुक्त तो हुआ. So let us pray for that. Okay. Okay. Thank you, Maharaj. Thank you. Thank you, Revati. Thank you so much. सुधा जी, आज सुधा जी को देख के मुझे लग रहा है यू प्ले हाइड एंड सीक ना. नहीं गुरुदेव, अगर आपके पास टाइम हो तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है. हाँ मुझे हाँ, लगता था बहुत सारे इसीलिए हाथ उठे इसलिए मैंने नीचे कर लिया था. मैंने कहा नहीं, आज नहीं हाँ, पूछते. चलो पूछ लीजिए अभी. एक बात बताइए, जब सब कुछ हमारा पहले से फिक्स है, ऐसे होना है हमारे गेम में, ठीक है, जैसे अभी आप बात कर रहे थे उस बच्चे की जो हाँ इतनी जी. यंग एज में चला गया, तो फिर ये भाई मैं उस पर उंगली तो नहीं उठा सकती. जो वो ईश्वर करता है कुछ सोच के ही करता है. फिर उसने बुद्धि और इमोशन ये क्यों इंसान को दे दिए हैं? बेचारे इंसान. बेचारे की बात नहीं ना, ये थोड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर ये होते ही ना तो कुछ था ही नहीं. फिर ना हमारी बुद्धि दूसरी तरफ जाती, ना हमारे अंदर दर्द होता, कुछ होता ही नहीं. फिर तो क्यों दे दिए? फिर जबकि सोचो ये जान कैसी नीरस ये दुनिया होती जब इसमें मोहब्बत ही ना होती, दर्द ही ना होती. कि इतनी नीरस ये दुनिया होती. नहीं, वो बात नहीं है गुरुदेव. ये कुछ तो इसका रीजन होगा, मैं ये जानना चाहती हूँ. रीजन आप ही हो. आप हो इसलिए रीजन है. अगर आप नहीं तो कोई रीजन नहीं. नाउ रीथिंक व्हाट आई सेड. वो तो मैं समझ गई. आप कह रहे, आप सुधा बन के बोल रहे हो, इसलिए आपको ये सब नजर आता है कि आप परेशान हो, कि बुद्धि है, इमोशन है. आप जहां हो वो वहां खड़े हो जाओ तो कहीं कुछ नहीं है. लेकिन हम वहां, कितने लोग हैं जो वहां खड़े हो पाते हैं? आप जैसा संग मिल गया तो हम भी थोड़ा बहुत खड़े हो पाते हैं, नहीं तो हम इसी में रहते हैं ना. तो अगर ये दोनों चीजें नहीं देता तो ज्यादा अच्छी दुनिया नहीं होती, कोई झंझट ही नहीं होता. इसी बात को फिर अगेन एक जगह पे लिखा हुआ है, उसने कहा है कि जब बुराई नहीं है तो अच्छाई पता कैसे चलेगा? How would you even know what is light if there is no darkness? How would you even know what is white when there are no other colors? Can you see in your own creation, you have created all these arrays of things. इतने सारे चीजों को बना रखा है आपने, और ये सारे चीजों को चखते हो कब तक? जब तक पेट ना भर जाए. फिर पेट भरता है, मुक्त हो जाते हो, फिर भूख लगती है. But the thing here is the one who absolutely realizes himself. आप क्या करते हो? मैंने इसीलिए आप सवाल पूछने से पहले मैंने आपको ये कहा ना कि सुधा जी को देखते हुए मुझे लगता है हाइड एंड सीक चल रहा है. I did not said because you were raising hands and going off, raising hands and going off. नहीं, मैंने आपका उत्तर आप पूछने से पहले ही बोला था. I said that because there is one person called as Sudha who is hiding. No, Sudha is the person who is searching and there is one thing that is hiding. वो ढूंढते ढूंढते जाती है, कभी अपने आप को देखती है, फिर कभी उसे ढूंढती है, फिर अपने आप को देखती है, फिर उसे ढूंढ लेती है.
But this is the play that is still going on. एक साइड में हो जाओ, choose one side. मैं तो वन साइड हो गई, चलिए नहीं आपका थैंक यू हो गया, आपने मुझे काफी कुछ वन साइड कर दिया। Okay. लेकिन जहां हम रह रहे हैं इस दुनिया को आप देखिए ना, जहां हम रह, चलिए हमारे भाई बहन है, ये और भी ये सब लोग हैं ना, कहीं कुछ होता है तो उनकी तकलीफ भी हमें परेशान करती है, क्यों? किससे? हाँ वो आगे डर जाते हैं, किससे? समझ गई हूँ मैं। Who is getting into that pain? मैंने अभी कहा ना सुधा जी, अब जब मैं चिदविलास को कहता था कि I like this pain, but some people love their pain. वो पकड़ के रख लेते हैं उसे। नहीं, वो पकड़ और जकड़ ये दोनों ही तो चीज है ना वहां पे। एक ही काम करना ना वहां पे, नीरस नहीं होना है उसमें। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप आंख बंद कर दो, यू बिकम ए स्टोन, नो। आई से डोंट जस्ट गेट इनटू दैट। फॉर एग्जांपल, एक डॉक्टर को देखो, ठीक है, देयर आर मेनी पेशेंट दैट कम टू हिम एवरी सिंगल डे। अगर वो उनके दुखी में दुखी होने लगा तो क्या करेगा? किसी को ठीक कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो जब आपके घर वालों को कोई प्रॉब्लम होता है ना, डॉक्टर बन जाओ, यू कैन हेल्प देम। बट हम क्या करते हैं, हम पेशेंट के साथ हम भी पेशेंट हो जाते हैं, फिर ठीक कौन करेगा? In that moment, there is a person who is needed. If somebody is in pain, I should be there to help them. Not, अरे तेरा पेट में दर्द हो रहा है, मैं भी लेट जाती हूँ तेरे साइड में। No, it's not the way. See, that is the way of the world, but not the way of a साधक. साधक उसी समय अपने सत्यता को देखता है कि ये जो सारे चीजें घटित हो रही हैं मेरे चारों तरफ, क्या ये कोई इंगित है कि मैं दुखी हो जाऊं, या ये इंगित है कि इससे परे चले जाना है? Is this an indication that all this pain is around me, or it is an indication that is only all that is pain? Get beyond it. इसीलिए कहते हैं ना कि आपका दुख, आपका दर्द जब आता है ना, तो भगवान को सबसे ज्यादा अब तब याद करते हो। सो दर्द को जब आप याद करते हो भगवान से, ये कहते हो कि दर्द ठीक कर दे। मैं कहता हूं दर्द के परे ले चल। डोंट जस्ट हील मी, टेक मी बियॉन्ड दैट पेन। सही है आपकी, एक दर्द खत्म हुआ दूसरा आएगा। दर्द के हम beyond फिर वही चलो, ये कहें, आई विल से द सेम थिंग। इट्स जस्ट लाइक ए बैट्समैन सिटिंग स्टैंडिंग एंड बॉल के ऊपर बॉल फेंका जा रहा है, वो मारते जा रहा है, दैट्स इट, यू हिट इट। और अदिति जी को भी देखो कैसे होगा, जितना जोर से बॉल आए क्या करना है? A master batsman does not apply force, it just gives a, वो देखो, it just shows it a path। वही करो ना। जितना बड़ा प्रॉब्लम वो हो गया, नहीं ऐसे नहीं, हो गया, इट्स गॉन देयर 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 देयर। जैसे अभी बोल के गई ना, आई हैव ए सिंड्रोम दैट आई एम ऑल फाइन। एक ही बात सुधा जी, एक कड़वा सवाल पूछ लूं, माइट बी ए टफ क्वेश्चन। इतने उम्र में कितने तकलीफें देख ली, इतने उम्र में कितने मृत्यु देख लिए, इतने उम्र में कितना सब कुछ सुन लिया, देख लिया, समझ लिया, जान लिया, अब भी आसक्ति नहीं छूटी। गुरुदेव क्वेश्चन तो ये था ही नहीं, आसक्ति वाला तो था ही नहीं। क्वेश्चन तो ये था, उसने ये बनाया क्यों इमोशन और ये बुद्धि? बनाया इसलिए, नहीं बनाता तो हम ज्यादा। हाँ। तो फिर खेल किसे कहते हैं? ये बात सही है, खेल किसे कहते हैं? उसको खेलना है इसलिए उसने बनाया।
आपको खेलना है इसलिए आपने बनाया, उसको क्यों? आप अपने आप को दूर कैसे कर देते हो उससे? ये भी सही है आपकी। आपने अभी भी दूरी बना रखी है, यू हैव स्टिल केप्ट अ डिस्टेंस, एंड दैट अच्छा, इज द इसका प्रॉब्लम। इसका मतलब गुरुदेव मुझे ये बताइए, आपने ये कहा कि जो ये सोच रहा है या दुखी है वो कौन है? जब हमारा उसका कोई डिस्टेंस ही नहीं, तो अगर हम दुखी हैं तो वो भी दुखी होगा, इसका मतलब तो। वेरी गुड क्वेश्चन, इसका आंसर एक लाइन में है। हम्म Create the distance between your mind and you, not between your God and you. हम अपने मन को पकड़ लेते हैं, भगवान को दूर कर लेते हैं। मैं कहता हूं भगवान को पकड़ लो, मन अपने आप दूर हो जाएगा। नाउ इन दैट क्वेश्चन व्हेन आई एम सेइंग, किसे दुख हो रहा है, किसे दर्द है, किसे पीड़ा हो रही है, हु इज गोइंग थ्रू दिस पेन ट्रबल, उसका काम ही वही है कि आपको बांध के रख दे और आप बन जाते हो। अच्छा, अभी आपने एक बात बताई थी, जैसे किसी भी, मान लो राधा कृष्ण को, शिव में, जहां भी आप ठहर गए हो, वहां से आगे कैसे निकले? भाई हम अगर साकार की पूजा करते हैं तो नेचुरली हम वहीं ठहर गए, हम मंदिर जाते हैं, हमें शिव दिखते हैं, अच्छे लगते हैं, हम वहां ठहर गए हैं। हम वहां से आगे कैसे निकले? ओके, हम्म, चिदविलास भी वही सवाल पूछा था ना। द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, सवाल एक ही है। नाउ आपने जब कहा कि व्हेन आई एम गोइंग एंड आई एम सीइंग शिवा, और हाउ टू गो बियॉन्ड दैट, राइट? अब जिस चीज को आप सामने देख रहे थे, द थिंग दैट यू हैव टू गो टू ए टेम्पल एंड सी दैट, कि मैं मंदिर जाती हूँ, ये एक्सपीरियंस होता है, आई सी दैट। Now that transformation should happen, that even though I don't go to the temple, the same thing should happen within me. मेरे अंदर भी वही दिखाई देना चाहिए, ठीक है? This is the second step. Then there is a third step. Third step में ये होता है कि I am not able to distinguish whether I have really gone there or it is just happening within me. ये third step है. Fourth step, the observer vanishes. जैसे कहते हैं ना, वो साक्षी भाव में रहना, वो साक्षी भाव में रहते रहते भी वो साक्षी हट जाना। द ऑब्जर्वर विल ऑल्सो वैनिश। अगर आप शिव सूत्र पढ़ोगे, शिव सूत्र का सेकंड सूत्र में यही लिखा हुआ है, उसमें यह कहता है कि जब तुमको पूर्ण बोध होता है तो दृष्टा, दृश्य और देखने का जो अनुभव है वो सब एक हो जाता है। दैट इज द वे यू ट्रांसेंड। कैसे करते हो? इट इज नॉट ए मेंटल एक्टिविटी दैट इट विल हैपन बाय योर थिंकिंग, इट इज अ वे। मतलब इट इज जस्ट लाइक एक, देयर इज अ वेल, ठीक है, एक पर्दा जैसा है, यू गो एंड हिट इट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, इट इज नॉट फॉलिंग एट द फर्स्ट इंस्टेंट। लेकिन आप जिस नाम से आप चलते हो, अगर उसी नाम को, और जैसे हमने ये बात कहते हैं कि निराकार भाव को भी देखना शुरू करो, व्हाट इज दैट? इंडिकेशन। सो क्या करेगा वो? स्लोली 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 व्हाट इट विल डू, इट विल, एक दिन ऐसा आएगा, ये इट विल जस्ट हैपन लाइक दिस। आपको लगता है कि सालों की तपस्या करनी पड़ती है, लेकिन हाँ, होता क्षण भर में है। इट विल हैपन इन जस्ट इन अ फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड। वहां तक पहुंचने की तैयारी हमारी है, जो बताया जाता है वो कर लो, एंड यू सी, लेट्स सी कि आपको रोकता कौन है। अच्छा गुरुदेव, जैसे कभी कभी आप बैठे हो पूजा स्थल में या कहीं भी बैठे हो, अपने घर में ही मतलब पूजा स्थल में बैठे हो, और आपको ये महसूस होता है कि वो ओम की धुन भी आ रही है, डमरू भी बज रहा है, घंटी भी बज रही है हमारे अंदर, वो क्या है? वो आपको जो अभी जाओगे ना हरिद्वार के रिट्रीट में, हम्म उसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर रिट्रीट। So be there for experiencing that. क्योंकि मैं अगर उसके बारे में बात करना शुरू करूंगा, आई विल स्पीक एटलीस्ट 2 hours.
आर यू रेडी फॉर दैट? मैं आपको तो कोई रेडी। प्रॉब्लम नहीं है? जो धवल जी भी बोले चलो चलो डन डन। हरी भाई को देखो नींद आ रहा, अब बंद करना पड़ेगा भाई। थैंक यू गुरुदेव। नहीं सुधा जी, इट सी दीज आर नॉट जस्ट सिंपल क्वेश्चंस। और ये उत्तर मैं आपको शब्दों में कितने तरीके से भी दे दूं, ये तर्कजनक सवाल ही नहीं है जिसको आप एक व्याख्या से समझ जाओ। ये एक्सपीरियंस वाली बातें हैं। इसको जो आप सवाल पूछे हो ना, उसको समझने के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द कॉन्सेप्ट कॉल्ड एज साइलेंस। जो मौन को समझ लोगे तब आपको इसकी अनुभूति हो जाएगी। सो अनुभूति कराएंगे ना आपको। आई हैव द आंसर्स बट इट विल नॉट क्वेंच दैट थर्स्ट, बिकॉज जो माइंड मस्तिष्क का जो क्वेश्चन होता है ना, उसको तर्क से या तो एग्जाम्पल से ठीक किया जा सकता है, लेकिन जो आत्मा का जो सोच है ना, उसे इस उत्तर से तो तृप्त नहीं किया जा सकता, उसको अनुभव से तृप्त किया जा सकता है। सो तैयार हो? ठीक है। वैसे भी आपके बहुत करीब ही तो आ रहे हो। अपने घर कब आएंगे आप? आपने तो हरि भाई को बोल भी दिया है। हमने आपको बता दिया अपने घर आना है आपको। ठीक है गुरुदेव, ठीक है, हम रखवाली कर रहे हैं आपके घर की। धन्यवाद। थैंक यू गुरुदेव। थैंक यू सो मच। हरि भाई, ये हमारे जनेश Thank जी you, हमेशा Sudha ji. लास्ट में ही आते हैं ना, Yes. और इनको हम हर बार यही कहते हैं कि जनेश जी अगली बार। Yes. Janesh ji, please unmute yourself. मुझे तो कभी कभी जनेश जी को देख के लगता है कि वो टिकट निकलता है ना स्क्रैच कार्ड पे, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। मतलब हाथ उठा दिए और लेट हो गया, चलो। क्या नहीं जनेश गुरु जी? जी, प्रणाम गुरु। प्रणाम। गुरु जी, प्रश्न तो है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी तृष्णा पूछने से निकल जाएगी। इसके लिए मैं आखिरी में आता हूँ। चलिए, गुरु समझ जी, में आ गया जनेश जी। पिछले दोनों हफ्तों में जो आपने बताया, परा और उसके पहले वाले में कि तुम्हारा नाम क्या है, इसके ऊपर काफी मतलब बहुत मगजमारी हो चुकी। अब गुरु जी, ये जो समझ में आया है वो बता रहा हूँ। अगर आत्मा के पास मन नहीं है, मन की तृष्णा है कि मोक्ष चाहिए, आत्मा को लेना देना नहीं है, और आत्मा अगर जगह से जाएगी तो उसको तो यक्ष लोग भी पसंद आएगा, उसको तो महर लोग भी पसंद आएगा, उसको तो हर एक लोग पसंद आएंगे, उसको तो वैकुंठ भी पसंद आएगा, क्योंकि उसको तो मालूम ही नहीं है। अगर उसको सही में मालूम रहता तो वो ये स्थिति में तो नहीं रहती। वो ये स्थिति में है क्योंकि उसको वहां जाना है या उसके परे जाना है। अब अगर संकल्प कर लिया है और गुरुजी के साथ संकल्प किया है कि मोक्ष लेना है, तो एक बार इस मन से परे इस जिंदगी में ये मन से इस आत्मा को यहीं पे बैठ के वो रास्ते से एक बार चल के तो वापस आना चाहिए, ताकि मालूम पड़े कि भाई यहाँ जाना है, ये दिस इज द लोकेशन, नॉट एनी अदर एड्रेस। ओके। पुणे से अगर कहीं गया नहीं हूँ तो बंबई गया तो भी पसंद आएगा, दिल्ली गया तो भी पसंद आएगा, कश्मीर गया तो स्विट्जरलैंड लगेगा, बाजू में भी वो बता देंगे कि ले है वो बहर लगेगा, फिर बताएंगे कि नहीं नहीं कैलाश तो बहुत तकलीफ वाला जगह है, वहां तो जाएगी मत, तो चढ़ी जाएगी ही नहीं। तो फिर तो गुरु जी अभी करना है बस। अभी करना है ना? सो देन द आंसर इज वेरी सिंपल फॉर यू। जितने तरीके के शब्द आप इस्तेमाल करते हो, मोक्ष, एंड देन यू स्पीक ऑफ लिबरेशन। मोक्ष है क्या? लिबरेशन क्या होता है? लिबरेशन कुछ और नहीं, आप
स्वयं मान लेना कि मैं लिबरेटेड हूं. I am not the one who is seeking liberation. I am liberation itself. किसको मुक्ति मिलती है? ये जो बांधा हुआ चीज है, ये कोई रस्सी से नहीं बांधा हुआ, ये आपके बुद्धि से बांधा हुआ चीज है. कि आपको लगता है कि आपको कहीं जाना है, आपको लगता है कि कुछ पाना है. यही लगना ही आपको बांध के रखा है. मोक्ष किसी और से नहीं मिलती, अपने आप से मुक्ति मिलती है. You get liberated from your own self because it is your own thought that is tied you everywhere. तो एक बार, for a moment, again ask the same question, what is your name? And when it appears, ask if it is seeking liberation. गुरुजी वही तो पड़ा हुआ ना, क्योंकि वो 2 हफ्ते से जब भी वर्किंग माइंड के अंदर जब भी लटका ना, तो धीरे धीरे कई सारी चीज, कई सारे लोग, कई सारी चीजें सब निरर्थक लगने लगी. तो फिर वो पिछले संडे पढ़ा और इसके अंदर वापस में अटक गया कि अगर इतना सारा है क्रिएशन, तो मेरा नाम चाहे जो भी है, अभी यहाँ मेरे को नहीं रही तो सब एक फीलिंग आ गई. वहां जाके क्या करूंगा, क्योंकि वहां तो वो तो अद्वितीयता ऐसी भी इतनी अप्रतिम है कि मैं तो उधर मर जाने को चला जाऊंगा. Okay. और वो तो एज ए बेनेवलेंट मदर शी विल टेक. But Janesh ji, now let us just think of one thing. जो सुधा जी ने पूछा और आपका कहीं ना कहीं connected question है, so let me answer it in just, I'll try to answer it in 2 minutes. जैसे मैंने कहा कि in order to experience that, you have to experience the ultimate that you say ना, कम से कम मुझे एक बार उस जगह पे पहुंचा दो ताकि मुझे पता चले कि यहीं जाना है, so that I will not get deviated from this, that or anything else. यही है ना? Not my mind. Absolutely, got it. So now myself. in this moment, just understand this part. I'll tell you in a story form. So might be after that story, you will get what I want to say. There was a student who was very talkative. Okay? Very, very talkative. Always, if people are talking, he will come between and put his own. कोई बुलाता नहीं है उसे. Nobody calls him, but he will tell his own things. Then he says, he said that, he did that, who is what, and all those things. उसका काम ही यही था. नीचा दिखाना और बकबक करना. ठीक है? Now you will understand what characters I'm talking about. So you will speak and make that noise everywhere. One fine day, everybody knew that this is a kind of a person. ये ऐसा ही है, बकबक करने वाला, फेंकू. So when the teacher also knew. So one fine day, the teacher came to the, उनका जो गुरुकुल में जब सेशंस होते थे, तो वहां पे जाके कहते हैं, I'm going to give you a task for a whole month. So whatever task you can think of, you think which task you want to take up and come to me, and I will tell you whether that is the exact task what you should do or not, and it should be related to your sadhana. Okay. And if somebody does not find an answer for that, they can come to me and I will give the process to them. So everybody took their own sadhana, and the Guru also said, it's up to you whether you just want to take this sadhana for 30 days, 2 months or lifetime. And then ye to feku tha. This is the person who will always speak of something or other. Everybody went into their own kutia ke andar chale jate, in small huts, they moved out. This fellow directly went to the hut of the Guru. And he goes and sits in front of him and says, now, can you tell me one thing, Gurudev? He says, what happened?
I just don't want to take any small sadhanas. छोटे मोटे साधना करना नहीं चाहता. Why don't you give me a bigger sadhana? Whatever you think is the highest. The Guru smiles and says, no, you can take it. No. मैं कहीं छोटा साधना ना ले लूं. आप ही बताओ कुछ बड़ा वाला साधना बताओ. You should give me a bigger one. The Guru says, but you will fail in that what I give you. Then ego को लग गया. बोलता है, how can it be? How can I fail? You give me the sadhana. I will prove it. I will do it. The Guru कहते हैं कि साधना is to be silent. और ये ठहरा बकबक करने वाला. Every time it keeps on churning, chattering. अगर नहीं तेरे को कहता है this much only for a month I have to be silent. What's the problem in that? तो बहुत छोटी साधना दे दी आपने. गुरु कहते कर ले. छोटी साधना है, कर ले. You do that. And goes, tomorrow morning I'm starting my sadhana, no talking. Day starts. Now just think of the person who cannot stop his words, keeps on chattering. What will happen to him? उसे खाना मत दो चल जाएगा, लेकिन अगर उसका बात बंद कर दिए ना, if you just make him silent, it's gone case. पहले तो सबके सामने जाके साधना कर रहा है ना, बात नहीं करेगा. 1-2 घंटे जाने के बाद, just 1-2 hours went by and he was getting irritated, agitated within him. बोलना है, वो एक शब्द है ना हिंदी में खुजली, वो होने लगते कि बोलना है मुझे. I have to speak. It continues 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. Is not able to hold anything inside. But Guru से पंगा ले लिया, कहता कि नहीं, I will prove that I will complete this sadhana. Somehow 2 days, 3 days, because every time he just runs to talk to people because everybody else is talking, he is not talking. He also wants to put his line, Mera bhi sun lo, but nobody is there to listen to him. So what happens? It's like, you see, you are wearing a shoe, socks ke saath, and it's a high ankle shoe with a high ankle socks, and you are having itching in your feet. How do you feel? कैसा लगेगा? हाथ जाता नहीं है, खुजली मरता नहीं है. How do you feel? Exactly that situation for him. Now finally he could not stay. He ran to the Guru and sat in front of him. He will not speak, so he wrote. He said, take this. I will not speak. I have been in sadhana, but I want to speak. Shall I break my sadhana? Then the Guru says, I told you earlier only. नहीं होगा तेरे से. You cannot do it. Better you break it. But one thing, if you just cannot keep quiet, how can you achieve the greatness in your life? If you fail in this, you failed in your life. But he was not ready to listen to that word. But at the same time, something moved within him. He said, might be he's saying the right thing. Sach baat kar raha hai. Something moved in him. So what he said, okay, he wrote again, I will continue my sadhana. Goes back. What he does, shuts the door of his hut and stays within only. बोला बाहर जाऊंगा तब तो बात करूंगा ना, बाहर ही नहीं जाऊंगा. Closes himself into the hut and keeps quiet. 7 days, 10 days, 15 days passed. Came out. Again goes to the Guru. Wrote, for the past 15 days I have not spoken. Is my sadhana continued? The Guru says, yes, your sadhana is continued. Keep on. Goes back. Another 15 days, 20 days pass. Comes out to the Guru. These many days passed. Am I doing my sadhana? He said, yes, you are doing it. Then he asked one question, writes it. He says, I am not talking to people, but I am talking to myself. Is my sadhana continued?
Amazing. The Guru says, your sadhana is continued because you have taken the sadhana as you will not speak, but you are still speaking to yourself. Your sadhana is continued, but continue your sadhana. See, the Guru said a very typical word. Your sadhana is continued, continue your sadhana. Goes back. Few days he stays. Finally, one fine day, early morning, he leaves the ashram, runs away into the forest. When he ran into the forest, months passed. 2 months, 3 months passed by, and all the other students of that place, they started thinking he might have died. कुछ लोगों को लग रहा था कि बात ही नहीं करके मर गया होगा. इतना बात करता था ना, he used to speak so much, if he is not speaking, he would die. But what happened is, some people thought the forest animals might have eaten him up. They came to the Guru and asked, like, what happened to that student? Might be he was attacked by wild animals and might have been killed. The Guru said, why do you think so? It might also be such that what he was seeking, he found it. उसे जो चाहिए था उसे शायद मिल गया होगा. But the students were very much worried. You see, जो सबसे ज्यादा बकबक करता है ना आपके जीवन में, आप उसे सबसे ज्यादा मिस करते हो अगर वो शांत हो गया तो. The people, those who irritate you, are the people that you are going to miss. Yes or no? Because you are addicted to their irritation. So what happens is, months pass by, and then one fine day he returns. When he returns, all the students, by seeing him, they were so happy. They all gathered him and started talking. Kahan gaya tha, kya hua tha? Like everything, like asks, like, where have you been? What have you done? And he started talking to them. He talked with them, but everybody noticed a huge transformation in him. He talked, and then he reaches out to the Guru's place. Guru के पास जाता है, गुरु के सामने बैठता है और कहता है, Guruji, is my sadhana still continued? He just goes, sits in front of him, and this time he's not writing, he's talking from his mouth. And he says, Guruji, is my sadhana continued? The Guru looks at the eyes of the student and says, yes, your sadhana is continued. Wow. Wow. And then he said, Guruji, when I was sitting in that hut, I noticed that I was not talking to anyone, but I was talking to myself. And on that day, you said, your sadhana should be continued. Continue your sadhana. And that day, I started sitting and looking actually who is talking. I could not stop myself. I thought, like, because I'm seeing other people speak, that is invoking that thing in me, and I am talking to myself. So I ran away into the forest so that nobody is there to even invoke that within me. But when I went into the forest, I thought I will be very silent, but it became more violent in that space. Means now there was no one to speak. Even I don't know what I want to speak, but now what was happening is all my past things that I have forgotten are coming and becoming horror movies for me in my head. That happened. Means purani cheezein sari yaad aa jayenge. The things that does not matter are creating havoc in my head. That was my case there. And still I remember your words. Your sadhana is continued. Continue your sadhana. Because I was not speaking. So I said my sadhana is continued, so I should continue my sadhana. I sat with those thoughts despite all irritation, all agitation. And one fine day, something happened. There was no noise. There was no sound. There was no talks within me. There was no sound outside. And in that moment, I shouted. I shouted so loud, but there was no noise. And this day I came back. I came, I saw all the people, I spoke to them, but there is no noise. I'm here in front of you, talking to you, but there is no noise. Is my sadhana continued?
And he says, continue your sadhana. Are you realizing what I mean, what the characters are in this play? Yes. Who is that chatterbox? Mind. Your own mind. What is the Guru says? Continue your sadhana. Your sadhana is continued. How long? Lifelong. And you continue your sadhana. Then what it will do? It will attack you in many ways. It will bring the non-relevant things. Let me tell you, आपके साथ ये हुआ होगा. Many people, when they are going into deep sadhana, after sadhana, there would be a space where they said, I was so happy in my sadhana, but now why I'm not even able to concentrate on my sadhana? That is a very, very good sign if you ask me. You at times will see like so many waste things that never even bothered me are coming back. मुझे पुराने से पुराने चीजें याद आ रही हैं जिसका कोई महत्व ही नहीं मेरे जीवन में, लेकिन वही मुझे परेशान कर रही है. खुश हो जाना. You see, your mind is failing, you are winning. He is failing out of the current weapons. He is bringing the weapons of the past, still failing. Your sadhana is continued. Continue your sadhana. अगर कभी आपको लगता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, why I'm even not able to concentrate, don't forget, your mind is failing. You are winning. साधना कब तक कंप्लीट करना है? कंटिन्यू करना है. Continue your sadhana. The sadhana is continued. And that day, there will be so much of silence as you experience it right now. Can you hear anything except my words? And that's exactly what I speak of. When there would not be even a need of me speaking, and even if I speak, silence persists. Nothing moves. Everything becomes standstill. There is no mind, there is no heart, there is no body, there is no thought. Even the words, you understand this. The words appear, dance on silence, disappear into silence. But silence persists. I came from silence. I will go into silence. All the dance and drama is in this life. All the noise is here in this life. But I know I came from silence. I will go into silence. And the day you understand that your beginning is silence, your end is silence, this drama will close itself and your now becomes silence. And if that becomes your life, silence becomes your life. There is no beginning, there is no end. Because there is no noise, the silence continues. Now tell me where you want to go. Thank you. Your sadhana continues. Continue your sadhana. I got my answer. So this is what is the basic talk, Haribhai, I'm going to start with. This is a basic I'm speaking. So you don't know what craziness will unfold. So you just sit and just listen and you see what happens to you. I say, no, you can handle my words, not my silence. Because in that silence, nothing of you will be left. It's not about miracles. It's not about magic. It's about destroying you completely, not to return ever again.
question? You asked me, can I make you reach that space? You are in that space now. So don't get lost in the sound. Don't get lost in the noise. Remember that story. Thank you so much for your time. Thank you so much for your questions. Thank you so much for being here, burning the late night oil so long. But I believe it was worth. So thank you everyone for your efforts. And more than that, as I said, your sadhana. It is not easy to continue among the noise. It's not easy to be silent among the chaos. लेकिन उसे ही साधना कहते हैं. So may you all win. May your mind fail miserably. Aham Brahmasmi. Har Har Mahadev. Thank you, Manoj bhai. Thank you, everyone. See you this Sunday. Thank you.